apparently the team to beat here at Ascension Pacific this year. So if you don't know them, you get to know them. You got 𝐿𝐼𝐍𝐿𝐒, you got Darion, Juicy, Scary, and Neff. These 5 individuals are scary in the server, and I have mostly heard just how scared players are of versing Scary, because you never know exactly what he's going to do. I mean, that's one of the things. First of all, he's the Thai player for today's series, and I think there are a lot of Scary fans rooting for Bleed, Thai fans rooting for Bleed, in fact. And something that you listen when you talk about with teams, you hear that there are certain smokes in game called Scary smokes, and there are people who compare him to Pacific players like Mako. So I think that says a lot. Yeah, and again, it's just how Bleed wants to even out this particular roster. If they're going to get somebody from that different region, might as well get one of the best Southeast Asia smokers. Hello guys, Scary, what's up? 𝘼𝐍𝐿𝐼, I think, has got to be one of the smartest, if not also best players coming out of Vietnam as well. If Jin is there for the explosive play, from Fancy, 𝘼𝐼𝐿𝐼 is there for how well he plays as the initiator. So a lot of big brain plays, a lot of firepower behind that is what really gives Bleed that edge against any other team, to be honest. He's someone who has a lot of lineups, and I think that's incredibly strong for a team like Bleed. And it's not just these players. I mean, something that we see on the I think also the coach, and that's something that's really interesting for me, because on Bleed they have a very prestigious coach. His name is 𝘼𝐿𝐼𝐿. He comes from European CS, and at the the same time, that kind of lends that influence, that European style of Valorant to this team. Yeah, and again, the other one on the other side for Orangutan is the Doctor. And lo and behold, he's also half Filipino, just pointing it out. But I will say, Doctor also pretty known for his initiator beforehand. He's played in multiple teams in multiple regions as well, so a lot of experience in that regard. Okay, well, let's have a look at the head-to-head here. We've got Darion up against 𝐼𝐍𝐿𝐼. And from what I've heard, yes, they play a little bit of duelist, but they can also flex into other roles. So tell me, guys. I'm excited to watch the game. I think it has to be said, right? We know India has a 100% win rate against Bleed on LAN. Because of Darion. I mean, he is that duelist. He plays Jet, but he can also swap over to a Sentinel. And that could be a Killjoy, that could be a Chamber. And that's especially important with this specific patch that we have, 6.11. He is a very strong opera, and that's why he's got a lot of first kills. And if you look at how Challengers played out for MYSG, he had like 11 first kills. Live analysis hoga kya? Hoga. I will analyze as much as I can. But 8 of those first kills. वैसे analysis करूँगा कि gameplay को affect ना हो. Yeah, and for the side of 𝐼𝐍𝐿𝐼, in this case, he has been holding the highest ACS in the South Asia region for the past couple of splits now. Again, that ACS that you see, the 272, that has been consistently high for the past couple of months. He has been, I think, biggest thing as to why the entry of Orangutan has been so pristine in any of their matches. And what's kind of also interesting for both of these teams is they haven't lost a single match, I think, up until split 1. So they're coming off of a really big high. And that's the thing, right? When this adversity hits, if one of these teams ends up being much better than the other, how are they going to operate? How is that going to affect their confidence going through the rest of the group stage? That's the most fun thing about Ascension to me. I think like a lot of these teams, they're the Rajas of their own like little region, the kings. That's what it means. I am the Raja. I didn't know that. I am the Raja. Yeah, we hear that song all the time. But yeah, I mean, I think they don't get that many opportunities to play on LAN like this against each other. And now that they're here, there's that chance to scrim. There's that chance to train and practice and get that exposure. Show us what you're capable of. I think वो इंसान सोया है. As it were. And अगर उठेगा तो बुलाता. when it comes to Bleed, जी क्या ही acting करते हो? Can 𝐼𝐍𝐿𝐼 कौन सी acting? Oh, thank you. Video देखा मतलब मेमोर भाई आपने. Can they open up sights and break open his anchoring potential? Okay, well let's have a look if we can get more predictions right here on the desk, because yesterday I think I went the wrong way a couple of times. Now we are all on the side of Bleed. Bings भी stream कर रहा है क्या? Predictions. I feel I've just heard so many good things about them, which is why I've lent that direction. South Asia, definitely an unknown region going up against the rest of the world. So I'm not going to be surprised if they do well against Bleed, but I just feel like Bleed are the favorites for the whole tournament. They really are. I mean, I'm already being attacked on Twitter. I'm not sure you guys really. Video pin करना है हाँ bro. I might be like the underdog guy in Pacific, but here's like some. Guys, जिसको भी technical बाबूजी का वीडियो पसंद आया थोड़ा share करो. जो भी लोग देख रहे हैं ना उनको पसंद आ रहा है. Problem ये है बहुत लोग click नहीं करते. उनको लगता है इसे brand endorsement है पर वैसा नहीं है.
you've got the whole squad practically, and that's what it comes down to. OG के पास Puma jersey sponsor है G का really cup. step up. We need to see Raffle kind of Ask be a little Dr. bit more Rushindra controlled, a little Sinha. bit more measured, and for I Aziz have to no kind of come in idea as about this. somewhat secondary duelist. If they can really pull off spectacular plays that way, then it'll be strong. For me, real quick, I just wanted to go on the other direction for Orangutan here. Even though I did mention Bleed, it's because I feel like they're multifaceted. They have so many ways to approach a fight, and Orangutan, they've really solidified this one-way approach that it's all about aggression, all about being able to bully your opponent into submission, and that's what you kind of see when you watch them in the South Asia side. So if they can really hone this and bring this kind of play style to the table, maybe they get a chance to get Bleed. So there you go. But we'll see if that plays और out public as expected. कैसा है That is it for सब the बढ़िया pre-show match number 1 of the day coming up just after the break. Let's go guys, 3 minutes to go. जी के सिमिलर टीम यहाँ जापान में कोई बॉन्कर को रहा है स्कार ज़्यूमिन देखिए अपना कोई लौंडा ही नहीं है आज यहाँ पे देखिए दूसरा टीएस पे देखिए Disconnected. Connected. इसमें भी नहीं है Disconnected. Connected. इसमें भी नहीं Disconnected. Connected. Channel switched. भाई कल वो गाना कौन सा था मेरे को याद नहीं सिड भाई को बुला लो सिड को पूछता हूँ मैसेज करके देखता हूँ सिड को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है देखते हैं अगर सिड आएगा तो ठीक है अगर नहीं आएगा तो आई अंडरस्टैंड सिड भाई का पनौटी चाहिए आज स्प्लिट के लिए फाटू का मेरे पास कुछ कांटेक्ट नहीं है तो मैं और बच्चा अगर तेरे को ज्वाइन करना देख मृदुल मेरे को स्ट्रीम है ना PG-13 रखना है थोड़ा Is Ascension knockout? No, bro. In the group, they will play all the team. क्या लगता है जीत पाएंगे जीत सकते हैं ये वही मॉनिटर था क्या इसके पहले वाला हाँ साटी XL 2566 के Popa जी what's your prediction I think 2-1 bleed guys अजीज टेस्ट कैरी करे तो कुछ ऐसा नहीं होगा गाइस आज कैरी वारी का कुछ नहीं है इंडिया नहीं है ये इट इज अबाउट टीम गेम प्ले हेलो वान भाई कैसे हो मैं ठीक हूँ तू कैसा है टू 0 OG अरे हो जाए तो मजा आ जाए अगर 2-0 आज ओजी जीतता है तो अपन कुछ तो अच्छे से गिव भी करेंगे बस Ladies and gentlemen, welcome back to Ascension Pacific. We are 1 second away, not actually, maybe a couple of minutes away from that first game of the day. We are going to be watching Bleed take on Orangutan. I'm all over the place, looks. Quack, save me. What's happening? What's happening here? Yeah, we're looking for them to take off against. I mean, I think it's definitely possible. It's very much so possible for Orangutan to beat Global Esports. They might be strong, they might be the favorites, but there is that potential. We know how strong Aziz, Tesseract, a lot of them have that spatial awareness. Yeah, very, very much
true. And again, these are players that are coming in from also very well-known teams in South Asia. Seen Bravo has been one of the most talented Jet players out there. His operator is nothing to stop at. So definitely something to watch out here for Orangutan. And again, I feel like South Asia scene as a region just embodies aggression as well. That's what they're known for the most part, and would love to see that be brought up here against Bleed. Now, before the players do the walk-in, Hello Bhavin bhai, hello Saraf. और sorry guys, जो भी टोक्यो का वॉच पार्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं कर पाया, परमिशन नहीं मिला. Hopefully next time मिलेगा. और honestly उन लोग का mandate है एक number of subscribers का, तो थोड़ा मदद करोगे भाई को तो अच्छा होगा. पर ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं. Personally, yeah, I feel like Bleed as a team, especially with the coach's influence, they love to go for anti-strats. And hello, I think the Demon Lord. partially what that means to me is against Orangutan, you don't really want to play Ascent because this is a team that's pretty strong in that map. And at the same time, for Orangutan, you know, there's so much to consider. Bleed, they did drop a couple maps. They were, you know, really dominant in their own region, but they did drop a map to, I think it was X10 on Split, and that was not a very good look. Yeah, I mean, for me, I feel like it could be maybe the Ascent and Haven for Orangutan. I would go against you on that one, but yeah. Okay. All right, well, we'll see if that is exactly how it plays out, but I have heard that the teams are ready to play today. Let's kick off day 2 of banger वीडियोस डालते भी है तो लोग देखने भी तो चाहिए. जैसा हम लोग ने अभी अनबॉक्सिंग वीडियो डाला है वैसा आई डोंट थिंक किसी ने ऐसा पहले डाला है, पर लोग देखे तो. मैं तो सब कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी बाकी आप लोग क्या हाथ में. The battle in Ascension, I think it's going to be really tough. It will be challenging, it won't be easy. It's going to be very chaotic. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. Buat tim yang tanding di Ascension, we can't just play not to lose. We are here to make sure mistake won't happen again. So I think friendship is something which makes Orangutan different from all other teams. इधर भी power of friendship. Just want to say, are you guys ready? Because we're done. As the home team, I want to show them that, and we have lots of strategy and firepower to beat any team in the world. Aditi hello बोल रही है. Hello Aditi भाभी कैसे हो? Điều bất ngờ giải đấu này, chẳng hạn như những ứng cử viên vô địch bị loại ngay vòng bảng. All the team here is a winner of their regions. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. We won't like scare anyone. RRQ जैसे power of friendship. भाई friendship तो G में भी थे, हम लोग तो family के थे पांच लोग. We play against the Ascension teams. Yeah, we need ready for it. We feel like we didn't get the opportunities that we deserve, and we're going to prove why we deserve to be here. 저희는 칼에 갈아고 나온 게 아니라 총을 들고 왔기 때문에. भाई ऑजी कास्टर्स को कल सुन के मजा आ गया था. Karena kita itu boom, kita itu confidence, kita itu pengen mendominasi sini ini dan kita tuh pede banget kita bakal angkat juara ya. You better bring your A game because we're not gonna mess around. चालू करा दादा. इसके पे रोलेक्स था लिपस्टिक लगा के कि लड़की थी कोई. हेलो बाबा जी, I'm good Soham, how are you bro?
Guys, I have a surprise guest for you guys who is going to be joining in. Let's go. Let's go. Welcome to day 2. This is our first match of the day, Bleed versus Orangutan. Bleed, you have side A, so it is going to be your ban first. Ban Ascent. Ban Ascent. OGS, your ban. Ban Lotus. Ban Lotus. Bleed, first map pick. Pick Pearl. Pick Pearl. Side select OG. Defense. Defense. Map pick. Bind. Bind. Oh भाई. And side select Bleed. लेगिया के मुंह पे स्माइल देखी. Defense. सीधा स्माइल ऐसी आई है उसके मुंह पे. Going into the second round of bans. Bind Bleed, pick your कर दिया ban. Fraction Haven split remaining. Ban Split. Ban split. I and think final pick ban करना चाहिए था. Orangutan. Fracture Haven. Fracture ban करेंगे कि Haven? Haven ban. Ban Haven, play Fracture. Ban Haven, play Fracture. Bleed, it's going to be your side select. CT, so Defender. All right, going to review really quick. Bleed bans Ascent. Orangutan bans Lotus. Bleed picks Pearl. Defense. Orangutan picks Bind. Defense Bleed. Bleed bans Split. Orangutan bans Haven. Final map Fracture. Defense for Bleed. All right, best of luck, guys. All the best. Good luck. Let's go. 700 की वॉचिंग और 300 लाइक. हाँ यार, ये सब तो गलत होता है, पर ठीक है, क्या ही करें. अभी मैंने उसे बोलना ही छोड़ दिया है. उम्मीद ही नहीं है मेरे को कि लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे. User joined your channel. हेलो. हेलो. क्या हाल है गॉडस्वीट भाई? अभी उठे हो क्या? क्या ही करूं. कौन आ रहा है? गॉडस्वीट तो आ ही रहा है. एक और जन आ रहा है गाइस. एक और जन आ रहा है. यू गाइस विल नो सून. Let's go RVK. RVK एकदम वो स्कैरी के साथ है. ऐसा एकदम छोटा बच्चा लग रहा है. ऐसा शेव करके आया है पूरा. कैरी का तो घर है. हाँ, थाईलैंड. पब्लिक आएगी उसके लिए. ऐसे लेगिया को देख के फाइनल बॉस वाला फील आता है. और डॉक्टर को देख के वो 6 handsome individuals on each respective team as well. But I need to say, Legia walking out at the end, oh, that looks scary. I would have anyway I put it थोड़ा racist लगेगा इसके लिए नहीं बोलूँ. He's got that vibe about him, and you just don't want to make eye contact with that guy, not at all. Shahrukh Khan बोल सकते हैं. You know, it was like half right. Half right in a way. I think it just goes to show that Bleed, doctor as a coach, they're not I've taking never any chances. They're taking been coached under him, so I don't comment it looks on like they have a coaches. comfortable win rate on that. Just don't want to touch that hot potato against Orangutan that, again, we talked about is very strong in terms of that aggression, of relying on Aziz's ability to open the sights. So just don't want to go against that. And we're still yet to see any Lotus. No team has actually gone all the way to Lotus yet. It was in that final series yesterday, but it didn't go to 3 maps. Yeah. So we didn't get to see that happen. But yeah, so it is going to be Pearl, then Bind, then Fracture rather. So an interesting affair considering I was doing my prep. I saw Bleed. You know, they were banning Fracture in most of their games. So their first ban. So they've been doing a little bit of homework. Happy to float that in this series. Yeah. So here's the thing. I feel like किसको support कर रहे हो बजाज भाई? I mean, Haven are pretty much the same. Because again, if you look at the Bind map, it's pretty strong percentage win rate for Bleed. It's 100% win rate for Orangutan here. लोगों को obvious नहीं था. Durian actually brings out the chamber. So we could be looking at a new agent aside from the Yoru from Nizzy yesterday. So at least for us, pretty exciting. खाना नहीं यार, मैं breakfast कर रहा हूँ. I'm hyped up for this. I'm actually a little bit scared for Orangutan though, because Bind as a pick, yes, I get that they might be comfortable on it. They have that double duelist setup, but Darian on chamber on Bind. When they played this in the grand finals against X10 Esports,
Esports. पर देखो guys जो भी देख रहे हैं honestly एक बात बताता हूँ bleed के सामने जब LAN पे खेल रहे थे oh my God. ऐसा नहीं है कि shooting में इतना फर्क लगा हाँ पर जूसी का shooting बहुत insane था LAN पे बहुत मारा actually हर टीम के सामने वो बहुत मार रहा था पर 5 पिंग पे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है I'm not saying पूरा हो जाता है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है the unknown quantity. Hello? We're still in the early days of Ascension Pacific, and I want to say, you know, all of this prep that we're doing, all of this information that we're trying to bring in has value, but then yesterday I just noticed most of it, you just need to throw it out the window because this event is its own event right now. Look, agents are here. Let's see anything different coming through. Aziz's going to be picking up the Phoenix. It is what they all same for Global Esports. A little bit uncommon. You have the Brimstone as the sole controller. But it is scary. Good morning, good morning. The double duelist for both sides is what I'm going to be focused on. Yeah, big thing here for Orangutan is just being able to funnel a lot of those. रेना हाँ अरे bleed का यही कॉम्प है गाइस कब से जेट रेना सोवा किलजॉय और ब्रिमस्टोन over and over again. If you need multiple heals, that's him, that's Sky, and then on the other side, it's a lot of dueling potential here for भाई मेरे को तो लग रहा है देख दिमाग बोलता है 2-0 bleed Stim Beacon to just elevate the Reina a little दिल बोलता है there's not a lot of mobility on her without her dismiss. OG अच्छा मैं तो दिमाग मास्क वास पहन के बैठा हाँ Esports lockdowns. They just have to give sight. They have to play retake or flood. OGS has a much better comp. देखो guys, at the end of the day, comp उतना matter नहीं करेगा. How you play it will matter more. But one of the main ways you use it right is just delete that lockdown. Delete. Obviously, चाहता हूँ bleed जीत OG जीते. I mean, we saw it a little bit yesterday too against now. बजाज भाई का सुन के थोड़ा change हो गया. And there was that knife kill. So you never quite know. I mean, these stats right now, it's all like in their own region. They were really strong on it, but. The thing about it is, you really need to respect that space sometimes. Stream volume थोड़ा हाँ नहीं Twitch पे देखना तो चलेगा. तेरे को इस पे देखेगा तो डबल आवाज आएगा. वही और सेम ही है कि चलो ये same Twitch specific. I mean, Underdog's big brain. Yeah, so maybe I was about to just point that out as well. Delay, you never know. Maybe also we see एक आधा second तो शायद आगे हो सकता है. Hands lineup. I don't know. That's just pointing at possibilities that I want to throw out into the. अभी क्या raw fuel साफ कर रहे हैं क्या बता तुम? अरे कुछ तो ठाप ठूप आवाज आ रही कहाँ से आ रही है? बजाज भाई खा रहे चम्मच ठोक रहे प्लेट में. अरे पीसी फॉर्मेट क्या ना माइक का सेटिंग सब हिल गया. Or just again, the play style of Orangutan is all about being in your face, and what better way to be in your face than just loading your team up with a lot of flashes and punish play from RVK's Astra. Now, I was saying it yesterday. I want to get you guys' opinion as well. Yeah. Pearl, attack or defender sided? I know he thinks it's attacker sided. Yeah, man. Okay, for me, neither. You have to have good mid control to dictate the pace of Pearl. I don't really think it's either attacker or defender, but that's I think Aziz भाई है ना अपने warmer के साथ खेल रहे वही है ना. Attackers know how to work around mid. A lot of these different spots. इसके बाद warmer. Hand warmer. ये लगता ही है भाई. मैं तो वही बोल रहा हूँ. Twitch से synchronize कर रहा हूँ तेरा stream बराबर है ना. हाँ अच्छा ऐसा हो गया. अभी ट्रेसरैक भाई अभी माइक हिलाए. अभी बोल रहे कुछ. हाँ चलो. And proving everyone wrong. We all predicted the bleed over on the Twitch sphere. And I'm happy to be proven wrong if it means there's an upset on the cards. Boys, are you ready for game one of the day? अरे हम तो ready बैठे तुम चालू करो अभी. Again, I think this comes down to it, right? Bleed 2.0. And then you have Orangutan playing off. You got Aziz, you got Raffle. Can they really break Bleed's back? And we do have, of course, the fans of Orangutan. भाई मेरे को माइक में ऐसा ऑडियंस का आवाज आना चाहिए. Who OG. Imagine कर थाईलैंड वाले लोग कर रहे. Very vocal. They were shouting, screaming every time, every single Reina better कि Phoenix better? मेरे को रेना बहुत अच्छा लगता है ये मैप पे. उसका फ्लैश है ना बहुत रेडियस कवर करता है. Phoenix भी अच्छा है ऐसा नहीं. दोनों अलग-अलग pros and cons है. Close quarters में Phoenix better. हाँ close quarter में Phoenix better है. Wall और ult का value कभी-कभी ज़्यादा मिल सकता है. This guy, Prodigy, bit of a young duelist. On the Reina, they're just going to be rushing straight down B long. But playing style के हिसाब से Reina बहुत suit करता है. Very much so, as you're already seeing Raffle just fight लेता रहता है. The aggression from Orangutan outside of A main not really paying off, but positioning from Anadol actually looking pretty juicy.
Nice. I mean, he just looks down the angle, and at the same time, the entire site has been engulfed in Scary's smokes. Look at it. It kind of turns into a bit of a one-way, but at the same time, just blocking off Link, blocking off defender spawn. It's going to be tough for this retake. Yeah, you have so many players alive. Pearl bind fracture. Hall presence is strong right now, especially with changes to the map. But here comes RVK. Here comes Tesseract. A bit of a trade. Back to a 2-on-2. Still hiding inside of the Nebula, though. It's going to be Neff waiting for a bit of a push in. And unfortunately, with the spike planted, Bleed just plays on around. And that's going to be the first round to Bleed. Man, I was sweating a little bit there, especially when you saw that back hall control start to crumble for Bleed, but somehow they were still able to get that through Neff's, I guess, just wildness inside of the smoke. Still having अगर फाइट लेना था तो फिर रॉफ्यूल को भी पिलर पे आ जाना चाहिए था। साथ में लेना चाहिए। हाँ, वो अकेला एंटी साइड पे था, रॉफ्यूल लिंक चला गया। Because I felt like Bleed was a little bit too overzealous. Maybe they were feeling a little bit. मेरे को लगता है अपन लोग कभी-कभी रिकॉन को थोड़ा ज़्यादा ही तोड़ देने का रहता है। Almost the round clutch. Just a little bit. I mean, you kind of start off things fast and furious, straight down B-long. It's just tough for Orangutan to really react in time. At least they got that information this time. Same sort of story. We had that turn, and it's already calling towards Orangutan that it's going to be a B hit. Still, it's going to be a B hit indeed. पर पर्ल में सोवा पता है अभी कॉमन हो गया inside of halls, but it doesn't quite connect. सबसे highest win rate going to be Bleed, letting it rip the fully automatic weapons. Again, halls control the same smokes. It's gonna be tough. They don't have the angles, Asarai. पता नहीं ये सोवा के अगेंस्ट कॉम्प में मेरे को लगता है इजीली हॉल्स पे है ना अब्यूज कर सकते हैं। हाँ अच्छे से हॉल्स खेल के रुका सकते हैं हॉल्स पिलर का सेटअप और अभी तो है ना बी साइड पे इतने सारे उन लोग ने क्लोज क्वार्टर्स कर दिए लेफ्ट राइट बॉक्स के पीछे खेल सकते हैं वो लोग खेल सकते क्रॉस फायर्स खेल सकते हैं बहुत Again, just pressuring खासकर ब्लीड जैसे टीम में जिसमें सिंगल इनिशिएटर है हाँ लेकिन वो बहुत त्रास देते हैं so much but at the same time you know it's still early we're hiding some of these strats but at the same time RVK पर मोस्टली आई थिंक क्या हो गया इसका मेटा प्रोग्रेशन कैसे हुआ कि वाइपर हार्बर मेटा आया अब वाइपर हार्बर मेटा का डायरेक्ट काउंटर है तो सोवा का विन रेट भी बढ़ गया पिक रेट भी बढ़ गया fine because again you can over heal yourself and that is the contact style that Bleed wants, but this is the first time they're actually going in for the contact against OG's setup on A. Aziz threw that curveball and it just tempers with them a little bit, goes in for the peek now, but Bleed, all 5 of them are waiting for another और player है भाई Bleed they're gonna back off instead. Did take any damage from that? Durian did actually, down to 30. Juicy! No! But Aziz did have to run it back. It's a bit of show of force. Again, a la orangutan style. Oh, Antidote is in a perfect spot to swing, but deals with the turret first and allows the 3 players of Bleed to grow through alley. At the very least, big information for Rawfuel, right? And he does find that angle, finds that first pick, but at the same time, trades just come straight back in from Crazy Guy. You can see the calls, the mid-round adaptations from Bleed going through, but at the same time from OG as well, Aziz up top, coming in from underneath as well. Antidote finding yet another. Bleed are just so aware of all of these angles, though, but at what cost? Juicy is the last one left. He has got quite a bit of time, but maybe not so much for the rotation. He's kind of assessing out if anyone's coming up from behind. नहीं मैं बोल रहा हूँ Bleed खुश रहेगा. हाँ मैं Bleed के बोल रहा हूँ Bleed I think so जीत सकती है it's the best that you can hope for. Yeah, again, burst tap or burst fire with the Bulldog unless you hit maybe like all 3 bullets against somebody that's full shield. Can't really get the takedown. Almost though, you kind of saw the remnants of what could be, but Orangutan again just able to react quickly enough. They're I think the सबसे easy बात बता OG के लिए क्या होगी? Quack, I was about to say. Bleed के strats पिछले कितने महीने हो गए? I was about to say something 4 महीने हो गए. Same. Again, it looks like they are not shying away from just trying थोड़ा to डेटा कलेक्ट किए होंगे थोड़ा वॉट रिव्यू किए होंगे it doesn't seem like their comp is supposed to be able उनके to लिए do that, थोड़ा but the movement of the player मतलब itself is रीडेबल रहेगा at least for those लीड past क्या couple करने of वाली rounds. है And again, that's something that
they really have to look out for. Orangutan, sometimes they have strength in numbers, and I think we just got a crowd cam of, I think that must have been Scary's parents. So that's kind of lovely, kind of adorable. Back to the game though, and that's going to be Bleed once more, prodding towards B. But this time, not quite set up for information. So it allows them to get the first pick, and they go straight in. Yeah, again, don't forget, guys, this is the newest. प्रॉब्लम मेरे को ये है फिर रीटेक साथ में नहीं हो रहा है ओजी का एक बंदा सोलो फाइट ले रहा है मतलब सेव करना चाहिए दैट इज ओजी ना मतलब वो हां पर you have to adapt if you are playing against good team हां मतलब equally अगर if not more than equally strong तो है फायर पावर में Bleed, right? I'm saying you need to ये ना सेव करना चाहिए था ये it's just not gonna happen when you have Juicy watching these angles. Maybe RBK on a bit of a flank, but there are still so many. मैं कल किससे बात कर रहा था आपको पता ना हम वही बात कर रहे थे कि ये वाला जो सीजन है ये ओजी के लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व रहेगा और उनको पता चलेगा कि वो उनका जो प्ले स्टाइल है वो इंडिया में वो इजीली जीतेंगे बाहर उनको थोड़ा टैक्टिकल डेप्थ या टीम प्ले लाना पड़ेगा और अगले साल ओजी ज्यादा बेटर कैंडिडेट रहेगा उनका मतलब You're really just sprinting down. You know, earlier on they had the turret, and that kind of slowed me down a little bit, but it's just so tough. And with Brimstone as well, so execute heavy. Once they hit a site, they have it, they hold onto it forever. Close default box, कुछ भी खेलना चाहिए वहाँ पे. All right. Info. I also want to add something to this one, Quack. And it's kind of basic, but it's something that Orangutan will have to Who's winning? Overcome as you well. Can see the score, Gary. A proper agent or proper initiator that gives them What's up, Gary? Right? It's going to be the Sky over proper the solo, Sova here. So that means that they have to check every nook and cranny if they get pushed out of the site. And again, it might work. But at least from what we're seeing here, Orangutan are just prediction. मैं तो दिमाग का prediction 2-0. बाविन तेरे साथ ऐसा हुआ है क्या अच्छी टीम के अगेंस्ट मतलब चल ये तो मैं बोलूँगा अभी 19-20 लेकिन कभी तो अच्छी टीम के अगेंस्ट खेला और कभी गेम बहुत जल्दी तेरे सामने से समाप्त हो जाता है और उसके बाद तेरे को समझता है गेम खत्म होने के बाद बहुत जल्दी गेम खत्म हुआ हाँ पेपर X 13-0 13-1 ऐसा हुआ है हाँ हुआ है मेरे साथ CS:GO में हुआ था हीरोइक के अगेंस्ट ओवरपास में ये चल रहा है तो फट खत्म होने के बाद 15 मिनट या 20 मिनट के गेम था CS:GO का भी उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ यार मैंने किया क्या गेम में कुछ किया ही नहीं बस ऐसा चलता गया चलने देने का हाँ बहुत फास्ट गेम खत्म हो जाता है मतलब ऐसा बाद में रियलाइज होता है कि हम लोग कुछ कर सकते थे ये कर सकते थे वो कर सकते थे बट game is over and it's being circumvented very quickly by Bleed. Again, maybe it's because of how the speed of do the you think Bleed has a super team though they are a good team or combination of that and Asia में they have some of the best players but it is going to really rely on the stopping power here from Orangutan. ये round OG जीतेगा कितने का bet भाव technical pause yeah because again you're going to rely on the gravity well from that Oscar to just at least be बस यार PTSD हो जाएगा मेरे को because double nano swarm from a killjoy I feel like not going to be enough to just run very quickly and not really take the damage from the maul admin बोला ना technical admin बोला caster बोला ना technical pause ऐसा सुनते ही ऐसे हाथ ऐसे कांप जाते हैं अरे मीका भी साथ में बैठा है मीका is being called out by of course the who's that coach the doctor manager another thing interesting to oh point Malav out has joined the doctor actually hello Malav is a player who has played in the Malaysian MOSG Canadian stud Kingsman so he actually has some experience against Bleed Canadian Casanova when it comes down to the game the players have to be the ones making these Canada में अभी sometimes you know just starting things off it's already 1-4 this is a good time to call तो जाने वाला था ना खार socials नहीं गया फिर घर पे कोई नहीं है और दादी को अकेले नहीं छोड़ सकता okay बाविन भी जा रहे हैं throw a tourniquet on us right अरे उधर watch party चल रही है मैं तो इधर से watch party कर रहा हूँ
mindset के and the बाहर philosophy here of how बाहर ही तो बैठा हूँ they want to catch Bleed before Bleed can really get into those sites. The unfortunate thing is here, they're kind of going in blind before that contact, right? If it's a main, good, but Bleed, they're not full committing to the fight. They see भाई का sound increase हो जाता था. नहीं ठंडी नहीं, अरीना बहुत ठंडा है. मैं बात कर रहा था इन लोगों से, अरीना बहुत ठंंडा है. After that, वहाँ पे you're kind of 36 running degree. low on that utility department, you know what I'm saying? Despite being down 4-1. Precisely. It kind of worked out for What else can you do? You have to keep the morale, right? You can't be like coming up with that अरे बोल रहा हूँ ये राउंड जीतने का होगी. You know, it's a little bit ये लोग tough B to पे ज़्यादा coordinate लोग with क्यों those खेल as रहे well, but at the very least you fight for map control. You लोग try B to be a rush little किए bit जा more रहे हैं. proactive with it. Because if you're Drone playing आया passive against बस हो Bleach, गया it's not B. going to work out. But this time, perhaps that solution is going to be the stopping power of the operator punching through Bleed with that first pick. Yeah. Don't point out that I didn't point it out that Rafiel's pretty nasty with the operator as well. So Orangutan having enough cash मैं on वही the बोला back मेरे को to लगा be able to Rafiel give एक और them pick that के लिए leeway जाएगा. is pretty freaking scary. But he Rafiel, can't is he play. gonna get tagged by this? But He अभी will. अगर post down दे दे, then how Yes, do he you will. win? Yes, he will. Because The question now is Bleed gonna chase him through the smoke while we do see Anadolu नसीब at least उसने miss कर being दिए. somewhat of a body Nice. armor. There's a bit of that bait setup. I think that's intentional. दो double flank. Nice. Knew that lockdown was coming in. Kind of like what Matt hold talked about. hold करो He did respect that space. He has his teammate here to back him up. So comes down to this. It's going to be Juicy pushing deeper in. The spike's been planted. Antidote has to come up huge in this moment. Finds one. Looks for the other. Wait But for your Juicy team, bro. is on a tear. 2 players remaining. And Aziz fights back. Throws the hot hands. And Juicy has to peek out. The spike not yet tapped, but look at the positioning coming through. He hears the footsteps. He watches it. He finds him. Run it back. Dismissed. And Juicy still needs to dish out more pain. He goes in for the 4th. He's online for the ace. And RVK is just watching, waiting for him to peek out. A little sliver. A little head. But Juicy executes him outright. It's 5-1 for Bleed. Aziz at wall, no? He knew exactly They had what wall, he they had had to do astral next. divide, they had really nasty everything. plan for Bleed because they placed it specifically there so that because they had that heaven control, you could see Juicy just in his brain multiple outcomes that he was going to win time and time again, and I cannot believe that nobody was able to topple off this beast of अगर अजीज ने ulti मारा, he could have just diffused the bomb. Aziz was charging in with the run it back to maybe catch off Aziz here, but there was no support from RVK. यही नहीं समझ में आया मेरे को कि अल्ट मार के डिफ्यूज क्यों नहीं देता. अरे उसने मॉली किया हेवन तभी ही टैप करना था ना उसको. हाँ तभी तभी हाफ इजीली हो जाता था. Get out of that position. वो लोग शायद कंफ्यूज थे कि हेवन है या सिटी है. that Juicy's playing around वो with. भाग के देखने के लिए. Here's the vision of RVK. So a little bit unfortunate. They tried so darn hard. वो डिफ्यूजर को मारने निकलता अल्ट को, अल्ट वाले फिनिक्स को, उसके कांटेक्ट पे दूसरा बंदा आराम से सिंक कर सकता है. All the frags going his way. Also, do you like the fact that they sold to take CT? Unstoppable. अरे that is another timeout. This time being called by just that he missed. a little bit peculiar. वो अच्छा ही होता अगर दो लोग रिटेन थे ना, if he like if he found Rafiel. Again, Orangutan are willing to thread the needle. You did see you have Brimsova post. That's a free round if you hold down the flank. I actually wasn't sure. अरे मतलब मैंने नोट्स दिखाए थे. उसमें एक चीज था ना, be liberal with your rights वाला चीज. हाँ वही क्या है, understand. Right, maybe this is just something for उतना ये नहीं expectation कर सकता कि post के लिए खेलो, वो थोड़ा सा नहीं what's already coming their way is just gonna come even smoother. For the Orangutan side, this gives them plenty of time. That was right, Angel. Bleed का coach. Were you surprised with Pearl being played? No, Pearl is insta pick. No, for OG. Because they didn't show the most like desire. But they had to ban Lotus, right? They didn't play Lotus. It really is Lotus perma ban not था. going to be easy. Every time you try to peek or take a single duel against a player from Bleed, you can expect a teammate to be right around. Then they the don't even change their comp and play the same right comp. next to them as well. Just So the comfort comp teamwork, type. that coordination is something that I'm really looking Before out you for. arrived, मतलब मैं यही बोल रहा था इनको कि bleed literally same start of same सब कुछ कर रही है जो वो 4 महीने पहले कर रही है. हाँ, because no one's beaten them on. Rafiel with the Blade Storm looking for a pick. He does get the first. They have like data. That trade. Dash. Right off the bat, again, heroics from Rafiel at least gives him that 4 versus 4. इसको देख के कल की निजी की याद आई क्या? Really the best of biomes for Orangutan at this point. Flash gets thrown out. Okay, just a little bit of contact. Juicy already knows. Got to tap a couple of shots there. Maybe you can get it.
And again, falling down. That's kind of nasty. What can you really do They're as a just Z's all in that very point when well somebody aware. throws the Lear right in your face? Already You can flashed turn because he around, thought but when there's 3 peaks, they shoot a CTR not really direct too much. CTR. Scary takes down Tesseract. And once again, it's down to RVK. He's done a bit of damage with the Sheriff a couple of rounds ago. Anuj, क्या करना चाहिए with Anuj? the good positioning of Bleed here, it's EP खेलना चाहिए ज़्यादा he's लोग. gonna get dwindled down bit by bit HP wise. Oh, shot पर by अनुज भाई लोग ज़्यादा लोग खेल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे. नहीं एटलीस्ट जब हिट हो रहा है तब है ना 3 लोग खेलने चाहिए. दो वॉल से एक एंटी डिफॉल्ट पोजीशन एटलीस्ट वहाँ पे फाइट तो लोग क्योंकि हमेशा एक जन तो पहले ही मर जाते हैं उन लोग अभी फाइट करने से. उससे पहले अभी एक और उनके टेस्ट्रैक मर गया. रॉफिल भाग रहा था, टेस्ट्रैक खड़े होके फाइट लेने का ट्राई किया. They can play something like एक और सिंपल चीज कर सकते हैं जो मल्टीपल फ्लैंक्स बेस्ट रहेगा. नहीं मल्टीपल फ्लैंक तो ट्राई कर ही सकते हो. और दूसरा चीज इन लोग जो किए थे लाउड भाई, जैसे ही स्मोक्स आते थे 1 सेकंड रुकते थे. हाँ स्काई फ्लैश आके सब फाइट लेते थे. हाँ डबल फ्लैश यूज कर सकते हैं, स्काई फिनिक्स और सीधा फ्लड कर सकते हैं. हाँ पर इनके 2 बंदे एंटी फ्लैश खेलते हैं. एक बंदा केजे अल्ट पोजीशन पे खेलता है, दूसरा बंदा पिलर एंटी फ्लैश. हाँ तो नहीं तो उतना थोड़ी साइट वाले को फाइट लेना है और नॉर्मल स्मोक करना है. वो भी मेन चोक पॉइंट जो करते हैं. हाँ plus Phoenix wall है ना, so they can deny that another side lane with that also. So if we try to fight, then it's not that big of an issue. I think simple thing is crunch अगर करेंगे तो फायदा होगा. करता ही रहेगा ब्लीड 5 men जब तक जीतता रहेगा ये लोग यही कर. This is information now. Darren with the blade storm trying to find pick with the updraft, but इनके हिसाब से we will find all that much. So वो फॉर्मूला है 2 राउंड पे जा सकता है. Bleed is just playing textbook. Simple. Here's the thing, when you're up against a comp like this against a 12 में से 2 राउंड the लड़ best way to drain it out, just wait for it. बाकी टाइम इनके साथ आना. Again, bait out the utilities and then just again, What is it? wait for it. But thankfully now, Orangutan's able to at least separate them with the smokes from RVK. अभी एंटी का अल्ट है और उनका 6th player from अल्ट Orangutan getting a frag as well. Timmy the turret just chipping in. Lockdown being spent to actually buy even more time, and with 30 seconds remaining, this could be. Why bro? Anti trying to catch him on the rotation, but angle hold कर चलेगा आगे क्यों जाना है? This is not going to be too good. There's still plenty of time for Bleed to either rush their way onto B, but no, it's going to be a re-hit on the A site, and the problem here is She has to Orangutan don't know about this, and but they're hunkered down. Thankfully enough, they do have the flash from Tesseract once again, so they're going to know about it, and they're going to be able to just again embrace the push of Bleed. Able to deny it as well, thanks to Rafuel's operator. Hey, Golusan, क्या कर रहा है गोलू? आजा TS आ रहा है. Slapping away Bleed. Good plays, good reads, and just denying. Bleed ने already एक time out दी लिया है. First of all, the Nebula players. हाँ एक ले लिया. पहले Bleed ने दिया फिर next round OG ने लिया ना. नहीं पहले OG ने लिया फिर next round Bleed ने tried to do a little bit something, but he managed to get information. It allows for Rafuel to rotate just in time towards Flower, where he finds that pick as Bleed tries to push through. Absolutely. So great contact like this is what Orangutan are hoping to be able to achieve more so than not now. The big problem here, yes, they still have the operator from Rafuel, was it took a lot of utility Bleed just का to be obvious able होता है. to do जैसे that. एमएन बीमन पे कुछ प्रेशर नहीं है, मतलब मिड वॉक कर रहे हो लोग. Seekers as well, indeed, but maybe that's what ये मैप पे जितना मैंने Orangutan देखा है needs to वही at least होता है. reset themselves, give them back that confidence. We It's a love good play that morale from boost. Sometimes you just need to Century swing though. things, Lockdown switch around the get the momentum early a little info. bit. Now they have to fight Rafuel's up, and he just Because gets if things continue to go the way पर that पता है they were इनका going, मिड का प्रेशर भी फेक प्रेशर रहता है. कभी really strong. The जाते Lear नहीं had है. information, and now they confirmed. They saw that operator in Rafuel's hands, so they're anticipating this. What they might not know is Aziz with the off angle, but the shots aren't good. In fact, it's going to be Bleed who get to continue on through, bulldozing onto the site. The same execute. Smoke आ क्यों नहीं रहा है? मेरे को नहीं समझ रहा. रोटेशन नहीं आ रहा. रोटेशन भी नहीं आ रहा है, स्मोक भी नहीं है. वो खड़े रह के फाइट ले रहे इतना यूटिल होने के बाद भी. I think because दोनों ने main push किया था, Anti was a little worried about the lurker, and Aziz ने I think already fight ले लिया, इसलिए Anti couldn't rotate properly, and Rishi already इधर टेस्ट के साथ play बना चुका था, तो फिर वो play making की वजह से स्मोक क्यों नहीं दिया? फाइट कर रहा था क्या? मैंने देखा नहीं रहा था. अलार्म बॉट तोड़ा रहेगा उन्होंने just aim in हाँ पर वो भी ठीक है, पर बी पे ड्रोन आ गया, सब आ गया. इसके पास वॉल भी है ना टेस्लैक के पास. First things first, you got to take out Neff. But Aziz wall कैसे कर सकता है? He was Number playing. 2, maybe you fight. No, go for running. He's वो ये वाला push He hears the footsteps, right? Oh my God! Link Caught in the reload, but it just allows for Terran to snipe him from behind. You cannot do a perfect wall, but वो Jenny से Shin तक तो wall कर ही सकता है. But I think as he chose It's about space creation. Bit by bit, he's starting to get even सबसे easy trick जो मिस कर रहे हैं वो है कि केजे को ये लोग मिड क्यों खिला रहे हैं.
Sova drone. So that the thing about that is he वो instinctively लोग went बी on the हैवी back आएंगे जब पता है which is हमने good देखा है उनके because वर्ड्स he को can बी survive a little सेटअप bit longer, कराना maybe get चाहिए a ना repeat. किलजॉय का जो But Joy मॉडर्न was smart सेटअप है enough to just cloud burst it, deny the that bottom vision, side plus double and mollies with Bleed were blunt already and expecting turret that for lane. maybe somebody हाँ is holding an एक angle जेट here एक जेट for डैश का Rafael. एंटी Maybe मॉली we just check a little bit. Juicy और was एक there, he catches साइड his प्लांट वाला and मॉली again अलार्म बॉट Bleed साइड पे are just और टर्रेट so भी लिंक hyper focused and just all knowing as to where Orangutan possibly could be placed at. अरे गोरू तू चैट में ज्ञान क्यों दे रहा है इधर आके ज्ञान दे sometimes just Bleed being ever so aware, sometimes Bleed just being a little bit sharper, you know, because of the confidence that they've gotten for their wins. They're unstoppable right now. I think the previous time I was actually called by Orangutan as well, so मैं तो क्या बोला दिमाग बोल रहा है 2-0 bleed दिल बोलता है कि This is their second time 2-1 bleed दिल भी नहीं मान रहा है कि there's so much going on. They're still holding on to one more possibly मतलब for 2-0 OG होगा the second half. But this is why Bleed are so strong. They've got that momentum. And another thing is just you got the three Singaporean players एक है part of the roster. Neff, और एक है होपियम कोपियम Juicy सब and कुछ Darian मिला as ले well. I जितना mean, भी करना every one of them 2-0 OG अगर हो जाता है तो मजा आ Darren, I जाएगा think, has been on the team the longest, and that's why he's got that rapport with everyone. But at the same time, Juicy, you know, Time Monster Gaming, young prodigy, couldn't play because he was a little bit too young at the time. And what are the next two maps? But I don't like the bind pick actually. Came from a game बाइंड और भी तगड़ा है बीट का वही तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पसंद आया वो जिन्हें बाइंड पिक किया I mean they went with their best map on paper but I would rather have them pick split कुछ तो नया सेटअप किया है स्काई है अभी ये क्या हुआ ये हो गया खत्म Still not able to find the shots, unfortunately. That's right. मुझे लगा कुछ तो सेटअप है हॉल्स में कॉर्नर हो Tries to throw a bit of a curveball from underneath, but it only managed to turn them away for a second. Darren using Halls as cover, peeks back out, finds another. That's Rafael के पास क्या था यार blades तो नहीं भाई please for the fear of God Killjoy को ए बी खिलाओ भाई एक राउंड I think Andy has to save here counter bleed where they push या तो Killjoy को बी खिलाओ या तो फिर पूरा रिटेक खेलो बी साइड तो पूरा एग्रेसिव जाओ हाँ या तो तीन लोग फाइट लो कुछ तो ऐसे आधा अधूरा मत करो क्यों क्यों एंटी क्या पॉइंट है अभी फाइट लेके I mean just save it at this point no he's still fighting no he's still fighting that was unnecessary I call it rebound plays it's been pretty nasty confidence like if Darion dies if someone else dies Juice is like there he's there I get it I get extra kill refrag for my teammate the ball bounces off the backboard he's there to catch it yeah he I guess he is wanted to that get guy closer though that's the to thing result to get 1 point of result oh my goodness it's just so strong if you और क्या watch रहेगा कि एक और gunfight जीत जाऊंगा rather have the only gun the next round or would you rather have an ult in the last I'm just trying to justify he's what always Andy was there thinking he's so present he was not thinking that I don't think he was thinking yeah but I think he whatever I can लेकिन ये स्टार्टिंग में राउंड हार गए थे क्या किया ये लोग push out mid क्या सेटअप लग रहा है वो सेटअप भी मतलब ऐसा अगर ड्रोन और फ्लैश साथ में आ जाता तो क्या वो तो सेटअप इंस्टेंट टूट जाएगा but ये लोग instead of helping Aziz and Rafael take fights test 8 क्यों खेल रहे हैं इतना ज्यादा with RVK of all people like use the sky ability to help take the next fight instead of surrounding the fallen comrade that is Juicy just making sure again that Orangutan don't overstep their welcome on mid which is really good Aziz has his run back too so could exercise run सोचना चाहिए क्या हो रहा है but this is round 11 so maybe they're saving it for the last round of the first half meanwhile Bleed you're allowed to burn both timeouts in the first half right this is not go for that VCLSA so if you lose this then I think क्या VCLSA में अभी भी allowed नहीं है दो टाइम आउट यूज करना एक नहीं but at least जरूरत they नहीं do पड़ती like रे how हम they're लोग को playing बाद very close to each other for these possibility to refrag for all VCLSA में टेक्निकल टाइम आउट में गेम के बारे में बात कर सकते हैं सीधा गेम खत्म हो जाता है कितनी बार टाइम आउट लेना भूल जाते हैं work with it Aziz managed to pick it up but here comes Scary a quick double now pushing in and out of the sky smokes Rafael like you mentioned angle with the shorty finds one but that's about it Antidote has to be the hero now but everything's blocked off tries to go for a peek only has a turret in his hand can't quite connect the shots and Neff shuts it down it is now 9-2 heroic का मैच है यार quick Bleed was so heroic का मैच है यार to just
readdress the issue of the back of the B site. Yes, there was Fast game there. hota tha, Yes, he was fast. able to pick up a weapon, but nobody was able to भाई deal with वापस Scary B gather just कर रहे हैं somehow हम managing to push अरे through his तो own smoke. अभी B guards है ना And he's at the other entrance. अरे नहीं भी होते फिर भी B जाते मैं वही बोल रहा हाँ हूँ वो बी Gets a kill, gets a उनका आई shutdown, थिंक सो and ऐसा है stops कि any हर form 3 या 4 of राउंड के बाद weapon एक राउंड pickup, any form मीडिया ए of पे प्रेजेंस दिखाएंगे resistance here from the फिर Orangutan B roster. जाएंगे Again, हाँ बी didn't जाएंगे like the I mean, if crossfires they're that not struggling to Orangutan get the did plant set on up, B, but then why Bleed not? were Why so fix? चलेगा इस बार prepared retake to खेल just सकते हैं यार throw ये का है ना ulti ultimates just to कौन make भाई? sure that Say अरे proper retake ऐसा नहीं कि एक मर आरबीके का अल्ट तो कप्पा बोल रहा हूँ 5-6 राउंड से But I think इधर अरे हील दे दे टेसरैक against this, and at the same time, it's the same nebula from RBK too. We just disrespected. They just go past it. They offer भाई the flashes. वो उसको स्मोक में ढूंढ रहा था टेसरैक ने मार दिया Aziz run it back, pushes past the Cosmic Divide, gets the confirmation that 4 more members from Bleed are on the other side of this wall. So ये फर्स्ट टाइम हुआ लेकिन हम लोग को बी पे रुका है अभी देखेंगे वापस से रीहिट करते कि निकल जाएंगे रीहिट ही करेंगे रीहिट ही करेंगे ब्लीड है ये चलेगा अपनी पब्लिक भी 3 खड़ी है पीछे आ गए आरवी के दे ट्रैप एंटी निकल एंटी क्या कर रहा है उधर Oh my goodness, Durian with the blades, with the op, looking quite unstoppable with that first pick. look at this. 30 seconds. एंटी ने रोटेट किया पर आरवी के रोटेट कर दिया ऋषि He स्पॉट हो spots गया the ना blades from just in case another छोड़ player दिया picks out. Now he's looking for more. What he doesn't know though is Tesseract right behind him. Slip the net, finds a second, a third, but not quite ending it all. Antidote comes in just to save them. Easy हो गया 9-3. 3-9. मेरे से start. Thank you for the devil 40 devil king YouTube. यो गाइस कर्स एक्टिवेट हो गया अगर एक्टिव हो गया तो नया वाला बंडल गिव अवे करता हूं तुम अभी डिफरेंस देखो ब्लीड कैसे खेलेगी डिफेंस पे ओपीएम मैं डेडलॉक गिफ्ट करूंगा पब्लिक को डेडलॉक नहीं चाहिए वो भी इसलिए खुद मजाक मैं पॉइंट सी देते भाविन 1000 की 500 1000 पॉइंट गिफ्ट करूंगा अगर ओजी ने कम बैक किया तो डेडलॉक अनलॉक हां तो बेसिकली बैटल पास ही बोल दे ना डेडलॉक से अच्छा नहीं डेडलॉक ही आईडी देके डेडलॉक खोल के दे दूंगा आपको आईडी देने का डालूंगा पैसा डेडलॉक खोल के दे दूंगा आपको पुप्पा जी टेक्निकल गिवेस कर अरे अरे ऋषि Excel 2566 के गिवे तो only Dr. Rishindra Sinha can do. This is in their map pick, so it's just a little bit difficult. But looking at how they 8000 points है individual potential. Every single नहीं one of them are capable बंडल of things. तो देखो गाइस बंडल 8000 का है और तू बंडल दे रहा है मैं सिर्फ डेडलॉक ही दे रहा हूं बंडल अगर ओजी जीतेगा तो हाँ ये मैप तो पिस्टल राउंड में ये लोग बी पे बेट सेटअप खेलते हैं I think पिस्टल राउंड पे they are expecting कि OG will farm the orb at A and try to contest with the orbs throughout the game because Phoenix है सामने and वो ये इसीलिए उधर ही ऑलरेडी आ गया था आगे वो लोग 3A टाइप्स खेल रहे थे समथिंग हाँ और बी पे बेट सेटअप खेलते हैं मतलब जो जेट रहेगा वो स्क्रीन खेलेगा और दूसरा बंदा क्या बोलते हैं पिलर के उधर से 5K के अंडर कोई माउस बताओ वाइपर मिनी अच्छा है मैंने सुना है मेरा लेफ्ट स्मॉलीज OG will come back potential है 9-3 पे पोटेंशियल तो है सोलो नहीं साथ में Very true, but back to it. Second half starts and मेरे को पर इन लोगों का सेटअप देख के ही अभी लग रहा है कि Let's pull back now. We go डिफॉल्ट वाला मॉली कैसे अरे नाइस ये किल बहुत इंपॉर्टेंट था That's going to be Aziz now pushing in, pinching down on the Scary. Support comes in from the back though, as well as Secret. Defender spawn. He's gotten the third. Tesseract's the last one left, and he's again trying to pull off some hijinks. Pushes through the sky smoke, but they play together. Crazy a quadra to start things off. Wow, crazy guy. Oh भाई बोलो ना फास्ट गेम हो जाता है समझता नहीं पीछे वालों को समझा नहीं रहेगा वो एक्स्ट्रा को क्या देखना है plant the spike but then somehow crazy guy pushing through outside of flower और लेफ्ट साइड स्मोक हो गया ना on his contact I think इस स्मोक के थ्रू कौन गया there it is beautiful timing on his recon dart and he just catches them again trying to focus elsewhere अच्छा इधर से हाँ बैकअप देने के लिए जाता रहेगा reads the situation well and you can see here again, just moment of astonishment from the face of astonishment of crazy guy. I mean, again, get the AR, make sure Aziz is ult for the first He is the round. IGL. Most times you might see him at the back, but today he's going straight in.
And Orangutan, this definitely hurts their confidence. They're still going to fight, though. They're trying to fight control through the split, but blocked off. Scary has an Ares. Come on. Yeah, that's not the best weapon to hold an angle without the smoke active. But if he survives and they know that he's pushing in, it's going to be let it rip. Yep, 50 bullets of just pure letting it rip. There it is. He got it through the smoke. He got it through the smoke, Aster. I mean, there were still Scary buying the Ares is interesting. If you're spam karega. Penetration. They want the spamming. It's not going to happen. It's a flawless win. 311 fanatic comeback OG भी करेगा. कर दिया तो nothing like it guys. We did talk about how off the bat मुश्किल है अभी. strongest teams that we have. I think Aziz is one of the Aziz should be one of the mushkil is for a lack of a kinder word actually. There's a lot of them actually. They got even the clappers and such. अरे नहीं उसका अल्ट भी आता रहेगा. पांचों के combine हो गए 35 किल. सब 7 मारे यार 70. This is how team should be. Cristiano Ronaldo को सब inspired by antidotes. नहीं रे अरे भाई स्टार पुलबैक भी नहीं आया. अभी आया bro. यार वो कभी भी मैं आंटी को पूछता था ना गेम खत्म होने के बाद ऐसा क्यों क्या ओनली मैजिक नो लॉजिक यही 6 साल में deny them any kind of contact here. Aziz is just rushing in again. The Orangutan classic and Scary's is nice kills Aziz. Crazy Guy's pushing in and Aziz is welcoming this flood of kills for himself. I love it, and that's how you want to play with the Phoenix as well. Paired up with Rafael, of course. Now they have control over the site. The spike's finally planted. And if you were Bleed, you want to go in for that save. So you're just waiting for some exit frags. चलो guys, एक और तुम लोग के लिए करता है. अगर OG 6 राउंड तक पहुंचा तो मैं बैटल पास गिव अवे करता हूं. मैं डेडलॉक तो हो जाएगा ना. डेडलॉक और बैटल पास सेम अमाउंट है. Thank you for the 40-0. What's next for your career, coach? और नहीं मैं आधा डेडलॉक Oh, okay, he's also still a monster. Rafael gets caught out here. It could be. हाँ मैं अभी अनुज भाई की टीम को कोच करूँगा. जो भी अनुज भाई टीम बनाएंगे. The Jets. So, economy-wise, check pretty good. Bleed saves at least the operator. Check. क्या है ना इतने सालों का रेंज बिल्डअप है कहीं तो निकाल दो ना बैठ के. बराबर. तेरे ऊपर नहीं बाकी लोग के ऊपर. 11-4. Oh, range allowed. Good start. Actually, it's a very important Durian. कैसे नहीं करेगा देखता हूँ मैं तेरे को. I mean, let's keep this up, Mr. Darian. You know, you have the operator still in your hands. Bleed, they mentioned buy back up, but Orangutan, the way that they took control over this site, the way that they pushed in. Sentinels हमारा तेरा से announcement हो गया guys. जैसे ही announcement आएगा मेरे को बताना. तो अनुज से हर महीना अनुज से मैं $2000 लूँगा. अरे सेंट्रल पे जाके उनका देखो तो सही सोशल न्यूज़ पे आ गया देख आज ही है. सेंट्रल सामने 100 thieves HellrangeR. Oh my god. Incredibly confident. Durian is still at that angle. He's fully blinded, so he's got to commit the dash away as well as the updraft. Is OG going to pressure B-Long a little bit more because they know that Darian जैसे को तैसा कर रहे क्या तुम भी बी आ रहे हो हम भी बी जाएंगे और कोई तो मैप में साइट ही नहीं है. But for the moment, it looks like Tesseract to set things तब तक up ऑप्शन ही मर रहे. Durian, he close. I think so ये foreshadowing हो गई थोड़ी सी. नहीं I don't think anyone is trying. मेरे को लग रहा है अभी भी मरेंगे. I love how Tesseract is supporting his team with the initiating abilities here. The guiding light. We plant लेने में तकलीफ pushes so many Bleeds players back, and that allows OGS to get the spike. पर इन लोग flank से आ रहे. ओ भाई juicy के साथ flank से आ रहे. Flashes आएंगे तो उधर लग गए. These angles, Bleed trying to set But awareness है nice flash. They reacted off to it, but. Can they actually find the frag though? That's the other question. Juicy, the dismiss. He runs back around. Juicy भाई around निकाल देंगे भाई. And Bleed. बोला तेरे को मोलो. अरे but test का flash अच्छा ना. They needed to get that one kill there. Bro, they cannot. They are too far, bro. ऐसा थोड़ी है कि टेस्ट का फ्लैश है और इन लोग का भी फ्लैश है तो भाग के फ्लैश अवॉइड करके स्विंग करेगा सीधा. But the only way to minimize the damage from Juicy's flash was Tess's counter flash at that moment, right? How? That is fine, but after that, what? But after that, तो वही है ना कि once you get the spike down and you like वो लोग का position ही सबके डर पे थे, कोई पीछे था भी नहीं. There is no decision that do you want to push CT or what do you want to do. वो idea रहेगा तभी कुछ होगा ना. Thinking कि what you want to approach the round. Like you can already see इसको देख के एक चीज तो लगता है. off of Juicy's pick.
हाँ बोलिए नहीं बोलो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। भाविन ने मेरे को मैसेजेस और फोन करके उठाया है मैच के लिए। Surely over here Rafael drops the ए भाई तू बोला उठूंगा तो आऊंगा। हाँ लेकिन तो मैं कॉल किया बस कि देखने को उठाए कि नहीं उठाए। पहले मैसेजेस भी कि टुंग टुंग बजा फिर कॉल आया। 11:30 बजे तो उठेगा ना अनुज। आधा दिन खत्म हो जाता है 12 बजे तक। अरे लेट तक जगह था मैं डोटा वो मालूम है मेरी माँ जो मेरे को बोलती है मैं तेरे को सेम बोल रहा हूँ। आधे दिन के बाद उठ रहा है। उस दिन आए थे ना अपन नटराज, तब से मेरा रूटीन खराब हो गया। It is a little bit of information for Bleed, and so is Juicy's position towards A main, but that is why we have entered. मैं बोल रहा था कि एक चीज तो देख के समझ में आया कि इन्होंने वर्ड्स नहीं देखे हैं या देखे हैं तो कुछ नोट डाउन नहीं किया उतना। इनको पता होना चाहिए मल्टीपल फ्लैंक्स आते ही आते हैं वो लोग ये बहुत पुश करते हैं। I mean मैं उनके जगह होता तो आरवीके को छोड़ देता चीप खेलने कहीं ना कहीं। भाई तू खेल। मैं तो आरवीके को नहीं छोड़ता, मैं तो एंटी को छोड़ता। हाँ जो भी है एंटी को छोड़ दे। क्योंकि मैं कल स्टैट्स को देख रहा था थोड़ा VCL ऐसे के प्लेऑफ्स के स्प्लिट 2 के, तो एंटी के सेकंड लोएस्ट पे 98 एडी आता है। time to survive. भाई कास्टर इतना चिल्लाया जैसे ओजी टूर्नामेंट जीत गया। 12-11 करो। एक राउंड 12-11 करो। Playing the calm game, playing the delay game. एक राउंड फॉर योर बैटल पास। क्या हो गया 13 पे? क्या भाविन नहीं बोला था 5 राउंड पे दे रहे डेडलॉक है? डेडलॉक आई मीन वही 1000 पॉइंट्स। अनुज को क्या तो इतनी नफरत हो गई वो एजेंट से? क्या एजेंट घुमा रहे सब लोगों को। मैं FPS गेम में क्या हो गया ये? Antidote 10 was better just in that पसंद ही नहीं आया। Back towards mid control. And OGS are trying to find different ways to approach this. A bit of a wallbang spray and does tag Darren down a little bit as well. So despite all this map control, despite the push and pulls, अभी अनुज भाई ये वाले एजेंट से इतनी दिक्कत हो रही है, आगे वाले एजेंट सोचे क्या लेवल के आने वाले हैं। एक आइडिया है? नहीं आइडिया नहीं है, पर मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि खत्म होने वाला केस। गोली चलाने को मिलेगा अजीज भाई। चलो भाई तुम लोग को मिल गया बैटल पास भाई। बैटल पास आ गया। बैटल मैं जीपे करूंगा, तुम लोग बैटल पास ले लेना खुद से भाई। आजकल एक तो मैं खुद ही नहीं खरीद पा रहा पॉइंट्स। मेरे साथ भी नहीं होता कब मैं खरीदने गया। मेरे बैंक ने बोला कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, रिपोर्ट कर दिया मेरे ट्रांजैक्शंस। हाँ ये मैप तो होने दो, मैप के बाद गिव अवे करूं कि अभी चालू कर दूं? ठीक है अभी थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। यू हैव एस्ट्रा अल्ट, यू हैव किलजॉय अल्ट। बहुत मतलब ये 3 राउंड का है। इससे पे खेलना पड़ेगा। साइकिल अल्ट साइकिल कर करके राउंड निकाल पाएंगे ना अभी थोड़ा थोड़ा। पता नहीं वही मेरे को क्यों लग रहा है कि यही खत्म है। Now I'm gonna tell you what's gonna happen. देखो rush B and play for the kill joy. बस वही कॉल आने वाला है। पता नहीं भाई। वाइब वाला बंदा हूँ, मेरे को वाइब आ रही है खत्म। देखो लग रहा है ये राउंड डेरियन 3 के मारेगा। डीपे ऑफ करके। हाँ इनका मिड वाला प्ले है, मिड वाला प्ले करेगा शायद डेरियन। डोर से निकल के पहला पिक लेगा मिड विंडो पे। जा रहा है वो खड्डे की तरफ ही जा रहा था। लेकिन ये अच्छा है, अच्छा सैंडविच था तो भी लोग ने तो करेक्टर से टाइमिंग मिल गया उधर कि वो जा पाया उधर। अरे पर देखो मैं सही हो गया, पर बात इतनी उन लोग ए जा रहे बी आते तो डेरियन भाई मार ही देते। हाँ so the same play ना, they're gonna try and get anti the orb and pop ult and play till they don't have so ult or kill Brimmer to break it. That is good enough. ना ठीक है बेसिक रख रहे हैं but they don't
No, wait for the kill, Jared. We just kill him. Clears out the site. Scary still Scary के बाद standing Ares away है. with that Ares. Tries to set up a bit of an incendiary, but भाई. he's on himself instead. और खुद With the कोई pistol, मोलोटॉव he कर. somehow managed to नहीं get वो कोना का मोलोटॉव है. Site miss pretty much should belong to Orangutan. That is at least until Double the fast Hunter flank. Fury comes अभी out. So Spike Plant भाई actually फ्लैंक पे figured कुछ out, कैसे but नहीं now है. What is this? He's got just the अरे sheriff. बाप रे. He's still doing it all. बोला ना मैं वाइट वाला Trying to stay alive. He's नहीं, so नहीं, aware मारेंगे, that there are a मारेंगे, couple of मारते हैं players अपने coming shooters. right from behind. Bench gets the पहला. dig, peeks out again, but Darian is here. Oh, He's got the upper. He ends it all. ये बात सही हो गई. ओ भाई तेरे ने ट्रिपल किल मारा ना. नहीं दो मारे चलो ठीक है वो भी ठीक है. मारे तो बोल रहा हूँ वही प्रेडिक्शन. चलो भाई गिव अवे करते हैं अभी गाइस. कोई बात बोला था ना वाइब मेरे को बेबी चैट में आ रहा हूँ. ओके गाइस ये गिव अवे का हैशटैग मेरे को सैटी ने दिया है तो बहुत ज्यादा ये है कीवर्ड देखो थोड़ा हैशटैग एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन जल्दी करो पैसिफिक जाना I don't know about Hey, you, SRX. You know, we might have been talking up Darren, but for me, on this map at the very least, Juicy is him. Guys, Juicy is you the need to be a guy subscriber finding and his an Instagram confidence follower to win. speaks That's it. volumes. और जिसको प्यार है ट्विटर भी फॉलो कर दो. I'm only a he because I can never be him. You need to be a subscriber and an Instagram follower. अच्छा कर सकता हूँ ना. हाँ. Let's look at the highlights, man. He even got an ace for the first time today. जाना नहीं JAANA है guys. JAANA. Look him up on Twitter. And lead these guys again. Spam मेरा सबसे ज़्यादा रहेगा probability. Spam. Finishing off this first match in style. I think Orangutan, you know, good effort. They really tried. They almost got it out on the last one. Yeah, they definitely did. But well, you know, we're gonna head off to a quick break and then come back with the next map pretty soon. So don't go away, guys. We will be right जल्द back. ही नहीं जल्दी JALDI है guys. JALDI करो इधर पढ़ो ना बेशर्मो. पाँच 500 लोग जैसे हो जाएंगे गाइस अपन रोल करेंगे. Guys, you need to be a subscriber and an Instagram follower. और प्यार है तो ट्विटर भी फॉलो कर दो. लीड एसेट बैक तो तभी हो जाएगा थोड़ा मैप पूल वीक हो गया था राइट बिकॉज़ वो तो देखो पहले से ही मालूम रहता है भाई कि क्या बैन होने वाला है. बट ठीक है ना अभी वो एक मैप तो रहता ही था ना कि जो भाई हम लोग ये जीत ही जाएंगे और वो इच्छा थोड़ी होता है. अरे बट वही है कि अभी इन्होंने प्रैक्टिस भी थोड़ा लेट चालू किया था इफ आई एम करेक्ट. See, that is a different thing, but you can't go into a series thinking ना कि ये मैप नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे. ठीक है थोड़ा प्रेफरेंस रहता है अभी भाविन क्या करने का. चलो गाइस चलो हिट दैट सब्सक्राइब बटन. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. अपन रोल करेंगे फिर. जो भाई कोई तो है तेरे चैट में पैसा देके दिखे. क्या पैसा चैट में बहुत पैसा आता है. 40 रुपए देके लेकर जल्दी करो पैसे दिख जाना है. जल्दी गाइस 12:30 पहले होगा कि 500 लोग पहले होंगे. जो पहले होएगा वो हिसाब से रोल कर देंगे. जल्दी करो पैसिफिक जाना है. बाइंड ओजी ने चूज किया तो फिर भाई मेरे को बहुत गलत चॉइस लगा. देखते हैं अभी आई कैन बी रॉन्ग. नहीं तो फिर ब्लीड का साइड चॉइस आएगा ना तो ये तो और कौन सा और मैप कौन सा चूज कर. स्प्लिट या तो फ्रैक्चर दोनों में से एक. स्प्लिट नहीं ले सकते ब्लीड. फ्रैक्चर भी ले सकते हैं स्प्लिट. मैंने ब्लीड का स्प्लिट देखा है पर उनका बाइंड बेटर है उनके स्प्लिट से. हाँ बाइंड बेटर है बट ये सब जितने भी एलसीक्यूज ये सब में आज तक कभी एक भी स्प्लिट नहीं हारी है ब्लीड. हाँ तो I would have even picked fracture. ओजी का फ्रैक्चर अच्छा है. फ्रैक्चर डेफिनेटली. रोलिंग. मोहम्मद रूपावाला क्या आप हो मोहम्मद भाई? नहीं. अरे उधर दिख के आता है रे. इधर बोलो क्या हुआ. मैं तो लोटस भी ले लेता. देखो गाइस अगर मोहम्मद भाई का रिप्लाई नहीं आता है. यस मोहम्मद भाई आपका इंस्टाग्राम आईडी बताओ. देखे आप फॉलो करते हो नहीं करते हो तो रीरोल होगा. यस हाँ ठीक है मोहम्मद भाई.
महा एक सेकंड वाला फॉलो तो करते हैं, बस एक चीज चेक करनी है, गिव अवे जीतने के बाद से करते हो या पहले से? अरे तो क्या हुआ, फॉलो तो करते हैं ना, ये कैसा है सीन है यार? नहीं अरे नहीं, मतलब कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, जीत के फिर फॉलो पे क्लिक कर देते, समझ रहा है? तो वो फेयर नहीं है ना, जो लोग पहले ही कर दिए उसके लिए। समझ रहा है तू? ठीक है ना, फॉलो तो आ गया ना। अरे वैसा नहीं है वो पॉइंट, फॉलो का पॉइंट नहीं, वो तो ऐसे भी आधे लोग वापस अनफॉलो कर देंगे। वो पता है अंदर से। पर हाँ ठीक है गाइस, मोहम्मद रुपा वाला आप जीत चुके हैं, मुझे मैसेज कर दीजिए ये गेम के बाद। कोई नहीं गाइस, सेकंड मैप के बाद वापस करेंगे अपन गिव अवे। हु बस अभी जल्दी करो, पैसिफिक जाना है, बंद करो। हो गया, जल्दी हो गया दोस्त, क्या पहुंच गए गाइस, पैसिफिक पहुंच गए, हो गया जल्दी बंद करो। Ladies and gentlemen, welcome back to VCT Ascension Pacific 2023. We won game deep in No, the yeah, this first is series invaluable of the day, experience and what a for dominant performance we saw coming out of Bleed. I had hope for Orangutan in that second half. They started to get a few rounds on the board. Hoping that they didn't have a low वो लोग इससे wiggle room, but at least that might एक मिनट गाइस, instill चैट से some बात kind करो, of confidence वॉशरूम moving ओके, into that पीरियड second बैक। map. मैं भी कुछ खाने को लेकर आया। It looked really tough in the first half, but that 9-3, चैट में जल्दी करो, पैसिफिक जाना है, चलो क्या बात कर। एक जन ने लिखा है जल्दी करो, नहाने जाना We're है। discussing that. Yeah. Innovation. Again, it feels like Orangutan did have some set plans. They were able to push back, but it cost them a और lot in मतलब terms of the utility as well as their creds on what they ऐसा needed to लग रहा है invest in just बेरोजगारी। in order to win that particular round. They had some ideas. They started mixing up a little bit more on that mid control, but a lot of what happened in the past couple of rounds that didn't work for them was the defaults that they did on either the A or the B side, which again, Juicy and the rest of Bleed were just so ready to receive. Looked like they were a different caliber, and that's what we needed to see coming out from them. We thought they were going to be favorites here for the group that they're in, but you're looking at Orangutan. I saw what does your day look like now? A lot of vocal individuals online saying, "Why does no one pick them? Why does no one predict them?" Honestly, it's like, well, mostly we don't playing know Football what we're Manager. get, and this is exactly what we got, right? And this is only map Does that one, make of that course. story mode We have a game second also? map, which will be a huge barometer as to how Orangutan is going to be able to bounce back and try to make a reversal happen in the series. I just want to work. And we're still a long way from that one happening. You're looking at the stats here. I know It's a 7-round lead that is my at the toxic end. trait, Bleed, but pure dominance coming out of the gates. Winning करो, that bonus जिम round, जाओ winning that Godspeed। second half pistol as well. And हाँ just वही करना everything, पड़ेगा। all those Godspeed, who do tiny you think was the advantages best going team in their India way, and then they except Global push those Esports in advantages. these They 3 made it look years? good, and that's exactly why. I mean, Look, Juicy is that picked even them in the rain. Now, sometimes you see Rainy, you're like, like, I don't know how that one's going to how operate. do you compare but that? when you have individuals that have that, I'll be 10 out of very 10 honest, free I bracket think dismissed, where you can just get to save PLT's it lineup back up. was It's very just good. absolutely insane the damage that you can do. I mean, it could be a little bit of competitive, but also I think just that the players on Bleed's side, Like, Juicy for some is one of reason, those I think guys who can after make Reyna lock-in, look that good. like the Four teams first that we've kills, seen and he play finds after so many lock-in, of you these- cannot so have many a of these conversation openings, about. especially with the way that he You takes cannot control compare them to over other teams B1. because I just For think the game OGS, you know, I was expecting improved more so things from drastically Rafael. He after got lock-in. first kills as well, but also a lot हाँ. of defense, and That you could see that, being that there is operator, almost you no know, way for you to compare unless eras in he's the game able to find that or confident even goal, compare he's not like quite able to teams continue across to chain more patches kills anymore. coming forward. One of the biggest differences, if I just may, was it felt Because like he got every hit single with time such a Orangutan big, tried to big make a play, patch, right? it was Like, always it like makes a one almost shot because they were winning always trying to go comparisons for the dry impossible. contact or the dry 11 peek. तुम लोग इतना And कुछ कर रहे when हो you're एक fighting स्टार्ट against Bleed, भाई it's मैं सही always बता रहा हूँ just मैं टी so शर्ट पहन के synergized with बैठा हूँ how पूरा they do their मेरा whatever आज they का want to गोल try यही to था कि मैं achieve, स्ट्रीम right? करूंगा ये It feels like they had to go through but that. by There the was one time I time woke up Rafael and I got picked joined on the here operator, I sure, joined but then Bhavin Bleed भाई immediately right after was मैच just चालू हो always गया था able पहला to राउंड हो गया था और adapt फिर to it मेरे so को स्ट्रीम quickly. करने का मन नहीं Expected करता like है बीच Aziz में to मैं be आधा अधूरा वो right, स्ट्रीम नहीं अच्छा but लगता you know,
we started to see like that little bit of brilliance. God's Reign का सीन तुम God's Reign वालों से पूछ लो तो बेटर रहेगा। मैं तो कल हमारा इन डेप्थ वार्तालाप हुआ है स्ट्रीम के बाद। हाँ हाँ मैं बता दूं क्या Godspeed को पूछ रहा हूँ। We spoke about this as well, Godspeed, right? Yeah, little bit थोड़ा मजाक कर रहा हूँ I'm keen to see more of that. I'm keen to see more of what they are able to do. But the thing was, they just can we see you and Anuj bhai playing together in any tournament, please? Local भी चलेगा। हाँ, भाविन उस दिन सबको फेक सपना देखेगा कि मैं रिटायर होऊंगा, उसके पहले अनुज और मैं एक सेम टीम में खेलेंगे। वो बोल के भाविन लगा कि क्या चुना तुम लोगों को, समझा कि नहीं अभी तुम लोग को? मतलब मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं बोला कि रिटायर होने के पहले खेलेंगे, रिटायर होने के बाद भी खेल सकते हैं। रिटायर होने का मतलब मैं सिर्फ प्रोफेशनली कोई टीम को साइन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फन में इवेंट खेल सकता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू जितना मैं पहले करता था, 12-14 घंटा दिन के नहीं डालने वाला मैं, पर फन में तो खेल ही सकता हूँ। Just saying, 2 बेरोजगार कोच हैं बैठे हुए। मैं किसी को भी जानता हूँ। Are you talking about someone who went international recently? Yeah, see only na. No, I mean there's nothing for them to compete for. बुरा लगता है प्रायर है प्रभात कैसे हो? मतलब it is not like they don't have anything to compete because till announced बस्ता उठा के देखो गाइस कितना फनी होगा कि अगर ऑफ सीजन हो रहा है, ठीक है, मुझे 1-2 इवेंट का मालूम है जिसमें 2-3 स्लॉट ही है इंडियन टीम को, और हम लोग ऐसे मिक्स टीम बना के गॉडस्पीड और मालव को कोच लेके और हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। दिन में सिर्फ एक स्क्रीम खेलने का, टाइम पास करने का, थोड़ा थियरी करने का और इवेंट खेलने का। थियरी भी करना है पता। और समझो वहीं पे सारे फ्रेंचाइज रोस्टर आते हैं। Oh, Bhavin bhai leaks दे रहे guys. Are you saying that there is a mixed franchise XSEA event that's going to happen? Everybody knows it. झूठ बोल रहा है। सैटी बोल रहे हैं मैं टीम मैनेजर, चलो। और समझो वहाँ पे हमने गलती से जी के फ्रेंचाइज टीम को हरा दिया, गलती से। ठीक है क्यों हम 5 उधर फिर तो सोनिक आया बोल रहा है ऐसा टीम है तो मुझे भी ले लो यार, पता है सोनिक can you actually go and talk to people though? हाँ गलती से ही बोलूंगा ना, क्योंकि भाई हम प्रैक्टिस थोड़ी का, हम मिक्स टीम बना के जाएंगे। भाविन मैंने तुझे जो मैसेज किया ना उस दिन उसके बारे में, हाँ तो सोनिक नहीं बोला था मुझे कि oh if I get the courage to go and speak to him I'll ask him myself. courage भाई इतना नहीं। वो बोल रहा था कि भाविन भाई का फेट देख के वो थोड़ा डर गया था। क्या देख के? बाल देख के। अच्छा सुपर चैट देखो। बोइन भाई अब पेटीएम में वीपी नहीं मिलता है, सर्च किसी ने तो मेरे को यूनिपिन कुछ तो बोला मिलता है। यूनिपिन पे मिलता है, वो रेजर पे से करता है। देखो मैं तो जीपे कर दूंगा, ठीक है, बाकी तुमको जैसा लेना है बैटल पास वो तुम्हारा हेडेक। वो 799 का आइसक्रीम खाने का है, जो करने का करो, मैं हमेशा जीपे ही करता हूँ, ठीक है, तुमको कैश और कुछ चीज में यूज करने का करो। Sonic was very close to being signed in VCL as well. By which org? नहीं हमारा भी तो। I still feel Bind is one of those maps where it should be attacker side, but the meta's just changed so much. अरुण आ गया क्या? वो कुछ खाने का लेने गए हैं। थोड़ा मसाला निकलवाता हूँ उससे। कुछ लीक्स दो ना वत्सल, क्या लीक्स? मतलब है देने को थोड़े। मेरे को रोस्टर लीक्स मत पूछना, टूर्नामेंट लीक्स चाहिए मैं दे दूंगा। How sharp can you be? हेलो हेलो अनुज, पब्लिक पूछ रही है नेक्स्ट टीम कौन सी है आपकी? कोई टीम नहीं है। हमने सुना आपको देश विदेश से ऑफर्स है। कोई टीम नहीं है।
one thing is Orangutan. मैं सुना आप सेंटिनल से बात कर रहे हो। वो सही है, वो सही है। वही सही है। मेरा बॉटल थोड़ा लीक हो रहा है, मतलब सेटिंग। कौन सा बॉटल? 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह 4 AM. And we finally get to see more chamber as well. I think it's the second time we're going to see it now in Ascension Pacific. उठ जा नु 4 बजे यार। On bind yesterday, it didn't end up working out well. Unfortunately, didn't get to see too much of that map. But Darian, after what we saw from map 1 of this series, I cannot wait to see Darian Chamber with chamber. Yeah, he's also all smiles too. He's like looking at the camera, through the peace sign. Feel तो मेरे को 2-0 आ रहा है। He's on the top of the ये world. बहुत गंदा हूँ मैंने ये। The other thing I noticed as well, if we're talking about player cams really quick, yes. I think it's 2-1. was RVK. OG 2-1. He is kissing OG 2-1. I've never seen someone. OPM तो बहुत अच्छा है, पर ये किसका पिक है? ये OG का पिक है। He's getting right into that crosshair. I mean, the more you can see, right? It's the same as I think Ja as well from Nas. He also does the same. Oh, Ja's got the Takes अपना map win percentage 3 times with Bhavin. Like literally playing a tabletop game. Yeah, that point. Oh my goodness. I mean, if it works, you know. But ऐसा अगर हिसाब चलता तो बस ना फिर। Orangutan, I really want to see how they can. ऐसा तो याद है कि एक टाइम पे हम लोग स्प्लिट पे अनडिफीटेड थे इंडिया में। लगातार गेम जीते रहे फिर आए पापा पेपर एक्स। पापा पेपर एक्स ने बोला सिट डाउन सर। वो गेम में तेरे को मालूम है हम लोग को शिनोबी क्या बोला? ठीक है, और जो सही भी था, बोला राउंड अगर 40 सेकंड तक चला गया तो तुम लोग जीत जाओगे। प्रॉब्लम ये हो रही थी, हम राउंड 40 सेकंड तक ले ही नहीं जा रहे थे। हाँ, शिनोबी बोला कि तुम लोग को बस रुकना है, 40 सेकंड तक राउंड ले जाओ, तुम लोग जीत जाओगे। मतलब कुछ चीजें हम लोग सही कर रहे थे, पर वो इतना एग्रेसिव हो गए थे ना। भाई वत्सल आधा डेडलॉक मांग रहा है आप लोगों से। हाँ, अनुज आधा डेडलॉक बोला, आधा डेडलॉक दे 500 चल। मैं बाविन को भेजता हूँ, बाविन मेरे लिए आधा गोल स्पैम किया जाए, आधा डेडलॉक चाहिए मुझे, मैं 500 भेजता हूँ तुझे। Bring this one back 2-0, certainly a possibility, but I Old Entity Gaming Team भाई I want to see 3. I want to अभी साई भाई CS खेल रहे थे, साई भाई, गोपी भाई, विप भाई 16-1 हारे। हाँ, Ghost, Defaulter, Fired Up, हाँ, R5 क्या रेडी 5 क्या राइडर हो सकता है ना, अपनी इधर पब्लिक खेलती है। हाँ, वो तो हो ही सकता है, पर मेरे को एक दिन पहले क्या बोल रहे थे वो सुन के नहीं हो सकता था ना। वो स्पेक्सर तो D5 है ना। हाँ, वो स्पेक्सर D5 है, वो अलग। एक दिन पहले नहीं इन लोग से आ रहे हैं लोग, रैंडम फाइव R5। हाँ, मैकगिल्स लोग एक दिन पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे ना अपने लॉन्डे जीतने के लिए। टिमर है ना। अरे नाइस टेस्ट रे भाई, ये प्ले भी कब से कर रहा है ब्लीड भाई। अरे मैं बोल तो रहा हूँ ये कुछ चेंज नहीं करते। घमंड है कि चल रहा है तो चलने दो। नहीं, घमंड नहीं है, जस्ट कि इतने रेप्स हो गए हैं ना। we've perfected every possible variation that we can throw at us. क्या ही करें अब, ऐसा होना चाहिए, बट Orangutan seems like they are going to be committing to this. I mean, they could always still ये वॉच पार्टी है, अपने दुखड़ों के बारे में बात करने की जगह नहीं। Chilling on top of A-Heaven. 100%. Procedures wise, भाई जूसी मारने वाला है क्या? 2-3 एक मारेगा, एक मार सकता है। अच्छा बोल रहे Moving on to Juicy, secondly a quick quadra. Rafael just kind of backing into it. चलो पैसा लगा बाबू, मैं कौन जीत रहा है? आरवी के निकालता है ये। नहीं रे, फूट गया। डेरियन क्या गेम? चेंबर डी हार गया। Darian now swaps over to the classic, a simple tap, and once more Bleed picking up the pistol.
ये वही बंदा है बस FYI अगर चैट में किसी को मालूम नहीं है इसने बूम के खिलाफ ब्रीज में एक हाफ में 30 मारे थे एक हाफ में हाँ आरवी के ना कॉन्फिडेंस इधर दो ना मतलब डेरियन ऐसा बंदा है जिसके साथ आप काम करोगे तो ही आप समझ सकते हो कि वो कितना क्रैक ये मैच जीतेंगे भाविन थोड़ा कॉन्फिडेंस रख तू ऐसा पहली इधर से नेगेटिविटी मत दे मैंने किधर बोला थोड़ा देख के ऐसी लग रहा है ऐसा साइड में कर रहे थोड़ा ऐसा है ना हां जीते करते अगर ऑन ऑन बॉयज लेट्स गो चलो ऐसे कर रहे पहले हार गए जल्दी करो ऐसा जल्दी करो तो मैंने भाई एक सेकंड वो कल बोला था भविन भाई ने कल बोला था आज नहीं भाई कल ऐसा था 6 घंटे लग गए एक बेस्ट ऑफ 3 खत्म भी नहीं हुआ बंद करना पड़ा स्ट्रीम मेरे को अभी देख जीतते मारो डबल पिक कोई बात नहीं देख डर गया भाई डेरियन पूरा कांप रहा है अनुज कांप रहा है वो टेंशन मत ले पावर अभी उन्हें खाना खा लिया पावर आ गई नाइस शॉट रे नाइस पूरा कॉन्फिडेंस अपन देंगे तो ही हां वही नाइस रे अकरम मार रे अरे मार चले को मार बस ये ज्यादा हो गया भाई अनुज तूने थोड़ा ज्यादा दे दिया कॉन्फिडेंस नाइस He got a couple from the previous map. Let's see if he gets more. 2 for good. बस रुक जा What is Neff doing? He's sticking? Are you serious? Oh, let's go! आना चाहिए हर जगह में बोला ऐसे बात करेंगे तो हो जाएगा let's go भाई पहले 5v3 था 5v3 का 1v3 हुआ और उसके बाद तभी भी अपन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहे थे यार विकी का शेरिफ सही में लेकिन बहुत अच्छा है उसका शेरिफ हमेशा से भाई अलग when Juicy just अभी ऐसे ही देखने का पूरा स्ट्रीम भाविन तो जीतेंगे ठीक है अरे जूसी का अल्ट है हवा में उड़ा पैन के दे बॉट मार कुत्ता फेक फ्लैश फेक आनी मत दो ये देख उड़ेगा चल अरे किसको बोल रहा तू अपना अरे ये क्या अभी अपना अभी देख अभी ये मेरी गलती है मैं तो डेरियन को बोल रहा था उड़ेगा भाई उड़ा लास्ट में चलो क्रेजी है भी उड़ा दो They want to take it going in towards the A site. Juicy players, the showstopper. मैं हट दिया उसने अल्ट नाइस मार रहे जूसी को एंटी फाइट ले गंदा पोजी एंटी फाइट ले लो स्विंग नाइस रे बढ़िया फ्लैंक पहली बात crossover. So he's taking his time on this one. Knows their positioning in fact. Might have even heard हेवन चला गया चलो नाइस up towards heaven. So keeping his crosshairs trained up towards the top angle, clears out lamps. Now knows a player inside of bats. अभी इज्जत में खेल रहे थोड़ा सही ऐसे नाइस just hiding in a corner. परफेक्ट तो खेला बस ऐसे थोड़ी ना पिक किया भाई ये लोग ने भाई and a triple kill for the guy 2-1 OGS. बस अभी OG 11 1 हाफ कर रहे थे क्या उनका वो स्लोगन बताओ भाविन भाई हां बोलो OG नहीं इसके अलावा भी तो बहुत सारे थे गाते तो रहते अरे असल में ये लोग फुटबॉल फैंस है ना फुटबॉल चैंट्स पूरा मस्त कॉपी किए हैं मेरे को तो बहुत पता है स्प्लिट 1 की ग्रैंड फाइनल्स में टाइम आउट में मैं चिल्ला रहा था ऐसे सबको भी पता शॉट भाई अकरम भाई उड़ा रॉफिल का क्या था गाना गाते मेरे को वो इतना भी नहीं मालूम भाई नहीं रॉफिल का मेरे को भी नहीं भाई वॉच पार्टी रॉफिल तो वॉच पार्टी कर रहे तो सब क्या स्लोगन भी थोड़ी याद रहेंगे अरे एक ही टीम तो जा रही है उनका सब याद रखना चाहिए लगा देना चाहिए पता है अरे मैं तो रिकॉर्ड करके अरे आंटी चलेगा कोई लगा दो आज ये रॉफिल बोल दो रॉफिल ला
eliminates Tesseract. Orbital Strike maybe trying to fend them off, but no. No one's caught by this. Nice, Richie. Bleed Nice, continue Richie. to push on in. RVK trying to Nade push or on Molly? instead, but now the Viper's wall comes up and he has to work around it. Trying to dance across, but here comes the Satchel. Oh, bhai, nice movement रे. A fourth kill coming in and Bleed. Movement का ऐसा round निकल गया है. ये TikTok superstar है. Yeah, 2 seconds. I was thinking like, I've actually defused the spike. Maybe it's not 2-2, man. Hold your horses. But हम लोगों को पता नहीं था. बोला स्कूल में गया 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा लग गया क्या? ऑटोग्राफ ये सब के लिए, फोटो सेल्फी ये सब के लिए. Stop him coming in because there was multiple players of Bleed coming from every single direction, so they wanted to isolate. राउंड का शुरुआत अच्छा हुआ था. But unfortunately, it didn't really matter as much. You did see the heroics from RVK here. It's really popping off. But again, 10-2 हाँ. ये बार ready था रे OG flank के लिए, पर I think anti कुछ सोचते radar देखते हाँ. Zoned out Dude, he's 11-3. He's up on the scoreboard. That's what it is. इन लोगों को इतना तो समझ गया कि अकेला खेल रहा है. To fight back again. I mean, it's so push and pull, but I love the effort from OGS. It's a different approach. You've got the updraft, you've got the Blade Storm trying to find these angles, these duels against the operator. Kind of anticipating it, but not quite sure where Juicy was. Dropped out from top of heaven, and now it's going to be that retake play from Bleed Esports. Look at Ness flicking upwards. It was Juicy that ended it all, but still, this is so much space being taken by the players of Bleed. I say players, nice shot. Just Juicy. 3 kills already. Another one. Anti has a good play here. Another. Darren sticks it. Okay. Bit of a hawk. It's back to the one-on-one. Doesn't quite have that much time. So nice, Ray Anti. Let's go. Nice. This is my realm. 3-2. तो smoke में मस्त चढ़ गया. Need आया तो. A lot of credit here for OG for really pressing Bleed there. Yes, they got the catch onto Aziz, but the other players were already positioned actually for a short. Yes, he gets caught there, but the nade does some damage, delays them, can't really. Juicy है तो बहुत crisp भाई. बहुत मारता है भाई बंदा. RVK to find that. ये बहुत बड़ा swing round होगा. हाँ ये round OG जीता तो मस्त लीड बन जाएगा. ये राउंड OG जीत के सीधा. नाइस रे अकरम. नाइस. Don't stop, won't stop. Let's go. Bleed ball. Their defense is crumbling. No chance, no shot you retake this. I did mention that it is going to be about how aggressive, how quick Orangutan can really press their advantage. And when you give them that bit of फेंक के मार इसको. बुलडॉग फेंक टकले पे. Do you see how a lot more confident they definitely are? Look at this. They are even challenging for positions right here. They're truly in their own element here. Abrupt नहीं है रे अनुज. नाइस रे अकरम. उड़ा. उड़ा ये इसको. खोपड़ी तोड़ साले का. अभी टाइम आउट आएगा ना? लास्ट भी टाइम आउट है. नहीं, I think एक बाय राउंड और वेट करेंगे. I don't know if the What if OG keep running the same thing here? He just say fuck it, we ball. But Orangutan fans here, supporters, starting to let their voices be. पर ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट था because इसके पहले वाले राउंड में हमने 3 अल्ट यूज कर ली थी. अगर ये राउंड हारते तो वो पूरा बेकार चला जाता. अच्छा. अभी भी अपने पास 2 बड़े अल्ट है. Actually दोनों के पास दोनों सेम अल्ट्स है. ये राउंड बहुत ज्यादा. पकड़ स्कैरी को. बहुत टकला घुस रे तेरी. अल्ट लेके जा अभी तू. आराम से. हाँ चल. बड़ा. Bhavin type नहीं मिले दिखे उसने. एक मार के भाग गया. If they can clear the site and push everybody back on top. Same करता ना Bhavin. हाँ एक मारो निकल जाओ. लालच नहीं चाहिए. Look how close Orangutan are playing. They're not going to get pushed back. They're not fearing anything. They are confident as can be. It is a save, and Antidot playing
परफेक्ट सेव कर रहे, डर गए, भाई बहुत डर रहे एंटी भाई खौफ एंटी दादा का सू ये लोग आके हुक्का स्पैम क्यों नहीं कर रहे इनको मालूम है आके मार दो पैच उसको maybe स्पैम भाई हुक्का में स्पैम ऐसा नहीं कि लगने ही वाला बहुत अरे क्या तीन जन है ना एक मालूम है एक टीपी किया ना मैं तो बोलता हूँ ए शॉट जाके कुत्ता को फिर भी जूसी रेडी बैठा है ना ए शॉट पे कुत्ता छोड़ने का हां तो इट्स इजियर टू स्पैम ना अरे छोड़ ना रे करने दे सेव उनको अब छोड़ो जूसी को मारो इतना ही करना और उसको भी मारो वुल्फ करने का भी जरूरत नहीं अब आएगा टाइम अभी तो आएगा ही लेके आओ बताओ गुस्सा दिखाओ अपने प्लेयर्स को प्रेशर में डालो You don't understand what you're trying to do. शेरी के पास पैसा नहीं है एसएमजी से खेल रहे again keep pushing नहीं आया 4 मैन सेव था इसलिए क्या हाँ तो एक्सटेंशन हो गया और एक बाय राउंड हो गया कुछ नहीं लोग का रटा गेम में लग गया अभी बोले सब तो पता है क्या बताऊंगा चलो in the South Asia region for I believe it is split one I think he was like second or third कोई नहीं है ले हाँ टेसरेक नहीं ले लिया भाग के बोला तू मत जा मैं जाता हूँ अल्टी मारा ना हाँ success on that contact orangutan feel a lot more confident in बिकर अल्टी घुस जाओ in alongside him yeah I really like हाँ रे इतना अच्छा फेल हुआ कि कवर नहीं किया उसने उसका जानबूझ के कवर नहीं किया the way that they work in tandem really forces Bleed to rethink their decisions. Now the orbital strike being spent just to kind of clear out that Viper's pit. But Scary is right around Fade या फिर Sky को बिलोंग भेज देते थे ना प्रॉलर लेके या फिर कुछ तो लेके फिर अल्ट करते थे ना अल्ट वेस्ट हो गया अभी वाइपर अल्ट भी कुछ ये नहीं होगा नहीं पर उनका काम ही यही था कि बी से डिफ्लेक्ट करना so they have a plan I don't understand it what they बस प्लान है एक सेकंड तो हुक्का में किसका अल्ट था वो अपना था वो वाइपर के अल्ट में अच्छा वाइपर के अल्ट में था क्या मेरे को हुक्का के अंदर दिखा कोई बात नहीं एक राउंड उनको भी देंगे रे मोरल नहीं तो पैसा उनका बढ़ेगा हाँ ठीक है 2 अल्ट यूज हुआ वो लोग का कोई बात साले अल्ट पे राउंड निकल डरपो के ये में मारा मारेगा tango but it just looked a little bit like they're going for those aim duels you know you're just trying to match your opponent's pace यूसी निजी कॉस्प्ले कर रहा है it's not quite so good against a team like 8 राउंड हो गए अल्ट नहीं यूज की 4 राउंड से अल्ट है उसके पास I mean OG are arguing that they do निजी तो भाई निजी जैसा कोई नहीं कर सकता कल 2 मैप मिला के 2 बार अल्ट played where Bleed want him to they stopped Hot Speed भाई बोले जा रहे कुछ तो प्लान है उनका अल्ट के पीछे दिखा तो नहीं अभी कैसे रोकेंगे भी रोक के दिखाओ टीपी तो करेंगे नहीं where he doesn't really get forced out completely नहीं आनी चाहिए बस you don't want to push an orbital strike of your own team even if you take नाइस रे पूछ ले पीछे से रोटेशन दे रहे घुसो बहुत दूर है रोटेशन गाइस them bulldozing on towards very good बस टेसरेक फ्लैंक भी दिख रहा है हो गया खत्म है ये राउंड खत्म बोला ना अल्टी से जीत सकते बाकी मारामारी में नहीं जीत रहे अभी अनलेस धीरज भाई कुछ करें कुछ नहीं धीरज भाई चेक करेंगे क्या नहीं रे धीरज भाई उड़ गए रे बाबा चेक भी नहीं कर रहे अच्छे से खत्म क्यों आ रहे हैं से इजी का भाग जाओ सेव इट pinned down outside of halls you got a Zeus Oh my God, अजीज भाई बीच में दोनों के अजीज भाई इन सैंडविच क्योंकि अगर धीरज भाई एंगल चेक नहीं कर रहे इसका मतलब सफल गए अभी तो टाइम आउट आएगा क्या लगता है गॉड ये देख के आना ही चाहिए ये लिटरली अगर धीरज ये सब मिस्टेक्स कर रहे हैं इसका मतलब अंदर से दगदग हो रहा है उनके incorrect with this if it ain't broke don't fix keep doing over and over again the formula is working पब्लिक का थोपड़ा बच्चे जैसा रहते लेकिन ये लोग बड़ी ही रहते हैं ना भाविन सब दिखते छोटे बच्चे
बचकान रहते हैं लेकिन बड़े अपना है अलग रहते हैं अपना थोड़ा बड़ा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो जूसी को देख के लगेगा वो 16 साल का है अब भाविन भाई को देख के लगेगा वो 22 साल का है 22 था एक जमाने में अभी नहीं हूँ 11 from before it has to be you know off of like round 3 Juicy was already मैं तो फीचर्स की बात कर रहा हूँ रे got a couple of ultimates for both sides दाढ़ी वाड़ी सब आ जाती है अपने को very useful for cracking open a अब ये राउंड अभी निकल गया सेटअप चेंज 3 भी कर दिया रे फिर भी अपन ही जीत रहे हैं अनुज राउंड देख अकरम को देख एक वो तो डर गया जूसी इसके लिए चला गया जूसी बोल रहा हूँ अपना ये नेफ पीछे चला गया वो खौफ है खौफ थोड़ा ना फफल गए टाइम आउट आना चाहिए था ना वही यार मेरे को भी लगा आ जाएगा अभी तक भी सही कर रहे हैं ये होल्ड करनी नहीं आता भी घुसते जाओ भाई मेरे को सोचना ही नहीं मुझे तुम लोग भागोगा नहीं नाइस रे अकरम मेरे को रेवेनेंट वाला मैच याद आ रहा है रेवेनेंट Oh, he's got a chance. He's got a chance. Durian only has a slow. Let's go! चिल्लाएगा Perfectly clutching the round. And again, OG dominate. Just so quick on it. So sharp. The way that they hit the site, even with 3 players हल्का सा Bleed वाइब्स आ गया ओवर कॉन्फिडेंस वाला बाकी लोगों का वाइब है Succession. He's doing it all. And OG are now हाँ तुम सर झुकाओ थाईलैंड सपोर्टर्स मतलब जो अभी ब्लीड को सपोर्ट कर रहे हैं थाईलैंड अरे स्कैरी थाईलैंड का है ना और देश थाईलैंड में ही हो रहा है तो इसके लिए बोल रहा हूँ जियोपॉलिटिकल कब से बन गया अरे नहीं भाई भाई अल्ट हाँ वही वो क्या होता है कि I guess वो लोग नाइस रे एक बंदे क्या दो बंदे थे ना And now this is going to be OGS second round. अरे मेरा बोलने का मतलब था जो इन लोग को सपोर्ट करे ब्लीड को सर झुकाओ एंटी का कॉन्फिडेंस आ गया मारेंगे बहुत बढ़िया नाइस रे 1v2 पीक हिम कम ऑन नाइस चलो क्या बात है बी पे बी जाए जा रहे उड़ाए जा रहे क्या बात है के सामने से अल्टी मारा वो एक को स्पॉन पे पकड़ रही है अल्टी जो स्पॉन से रोटेट मार रहे हैं भाई साइट ही नहीं गया अल्टी कर रहे तू नहीं तो गालियां डालता था अल्टी पे अभी मैं रहता तो मैं खाली है बी साइड एड़ा बना रहे ए स्टैक कर रहे हां मैं भी सेमी कॉल देता मैं बोलता गाइस बी खाली है आई थिंक सो ये ऐसा कॉल दिया होगा तभी साइड को बिना और उसके बाद मेरे टीममेट्स अलग बोलते हेल मैं बोला गाइस क्या करूं राइट को बोलो यार इसी बार एपी हिट कर रहे trusting in the team to do what they can because this is just Terion mara orbital strike though perfect no not quite get away the orbital strike still closes him out धीरज में उठा के गया using all of this space the sky smokes to make their way in counter orbital ओ भाई बच गया आरवी के नाइस heal है ना anti heal anti with the heal still up around nice of you Rafael with the offense swaps the blade फ्लड कर रहे a bit of a trade from Tesseract nice ठीक है anti भाई आ जाओ आगे आप प्लीज they really want this and he has to make it through the teleporter 1 HP almost didn't make it out alive Asterai Damn, but great satchels from Juicy though. He's cut like it's really bad for RBK. He's cut it up here very fast. At least he knows Juicy is actually here. So if RBK can play in a tricky spot, RBK बहुत बढ़िया है इसी छुपके के he sees the head. Anti का flash नहीं हुआ ना उसने timing करके इसलिए वो निकला. The positioning for the post plant is so favorable. नाइस रे अंटे दादा लेट्स गो जैसे को तैसा 9-3 को 9-3 कैसा हो जैसा हो Look at the scoreboard. भाई जूसी 18-9 पे बैठा है फिर भी 3 ही राउंड है भाई ब्लीड के कुछ नहीं यार मैं बोला ना वो पहला राउंड से खत्म पावर चाहिए थी बस पावर दे दिया भाई एंटी ने बहुत अच्छे राउंड निकाले बहुत सही खेला है specifically for Antidote to come through X Factor so smart एंटी ला Wow.
Now on the अरे ये spam कैसे लगा रे? Again, Orangutan showing to us why they've been so dominant in South Asia. नहीं मेरे को लगा तब है ना इससे पहले रॉफिल को पीओवी दिखा रहा था नाइफ से मारा उसने हेड पे मेरे को लगा ये कैसे तो पड़ा है कैसे नहीं बता नाइफ चैट में भी किसी ने पूछा is there a reason why Bleed hasn't called a timeout like YouTube के Twitch के chat पे ये कुछ talking about the top contender that is Bleed so if ever any team भाविन अपने सामने भी लेट टाइम आउट कॉल किया था नहीं हां नहीं किया था पहला आई थिंक लगिया है तो देख रहे हैं कि बिना टाइम आउट को कोप कर सकते हैं क्या उल्टा उन लोग को लगा रहा है कि ये को डिफरेंस अच्छा है हमारा टी साइड उससे भी गंदा है तब उधर मैं टाइम आउट बचाता हूं अपने दोनों ऐसा है कुछ नहीं गए जीत गए गंदा उनका लेगिया का थिंकिंग टाइम आउट्स को लेके बहुत अलग है so it's not for him it's not a way to fix the issues they had but it's like he looks at it on their defensive side. I think it's possible but Bleed could also be really strong in the attack as well now. Want to see how ज़रूरी नहीं है कि हर चीज से आदमी agree करे. But I'm sure like even like there's always going to be differences within coaching staff in the way they controllers that could really trip them up. कुछ नहीं ऐसा बोलना चाहिए अपने को कर से तभी जाके कर से नहीं बोलेंगे तो हो जाएगा एक भी बार किसी ने बोला नहीं मैं बोलता हूँ कर से भाई कर से उल्टा लगा उल्टा ये देखा अभी इसको उड़ाएगा टेसरैक 2 एचपी में पिक कर तू पिक कर टेंशन मत ले पिक कर ये इसको कोई कॉन्फिडेंस है हेलो मतलब यस हम लोग यूज करते थे हां पता है मेरे को how did you find out I was the one who made it करियो से पूछता अच्छा क्या ये स्मोक नहीं कि to swing yeah you first guy says peak second guy says kar it's like मार्को पोलो का हिंदी TikTok जो भी TikTok जो भी तेरा ये पिंग पोंग 1 2 3 के जगह पे to have more accurate to swing and जो भी second like I think it's either first जो बोलता है या second जो बोलता है वो wide जाता है ऐसा कुछ तो नाइस रे अकरम नाइस अकरम बढ़िया oh this is अरे अकरम निकालता है राउंड अरे अनलकी रे मटका मारता है रे जूसी कोई ना तुक्का लगा जैसे चीटिंग करेगा तो मेरे को नहीं खेलने गया boycott ईदन आज कल थी ना आज है ना Rafael was trying to cross around the corner so that again he can find a better angle to ईद मुबारक भाई जो भी है ईद जो भी सेलिब्रेट करते हैं सबको ईद मुबारक आई थिंक सो हमारे सब जो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों के सबका तो सबने कल मनाया है इंडिया में तो आज है छुट्टी भी आज ही है हां तो बस मारेगा राफेल so smart बात करता हूं and again just भाई बेचारे ये लोग तब से एक क्वेश्चन पूछ रहे भविन भाई आपसे और अनुज भाई से मालूम नहीं भाई हु कैन स्टॉप फैनेटिक अरे भाई हमको जाने तो इतना औकात नहीं है पता नहीं कि कहां जा रहे हो उसके लिए अभी के लिए now just Creed needs to work on jersey no I think so the new jerseys are very good doesn't quite find too much but at the very least this is 4 pistol rounds now for the entire day that Bleed has won. They gotta be careful to not alert Aziz. कौन है कॉल पे बच्चे मैं अनुज मालव और गॉड अरे मैंने भाविन स्ट्रीम में कमेंट डाला है एक्सक्लेमेशन गेस से कि एक्सक्लेमेशन कॉल है एक्सक्लेमेशन गेस हां सो जस्ट अभी तूने चेंज किया है क्या गेस नहीं तूने वो बोला कि भाविन भाई इतने अपने बड़े स्ट्रीमर आपके 100 के सब्स रोड टू 100 के चालू है क्या बात है ओ भाई नाइस being dropped as they try to play too close inside the smoke and it's not Bleed that are masters of that it's actually OG नहीं पर अच्छा था यार अच्छा था चलो फ्री किल्स दे देंगे लाइक वी डोंट हैव एन इशू विद दैट अरे नाइस निकल सकता है राउंड अच्छा उधर से हॉन्टे and there's no one to hold on the ankle Scary's already down what is Nice happening Neff in the side पता है swing together let's go अरे ऐसे नहीं he's got to be careful with this लेट्स गो टाइम है लेट्स गो नाइस राउंड लेट्स गो दोनों इको जीत गए अपन OGS they did it in the first half they're doing it again
the boys, the bones, they do it आरवीके का all. नहीं गा सकते वो वाला आरवीके का चैंट याद करना पड़ेगा expecting this. I think it's a bit of a rude awakening for both teams. भाई दोनों साइड से थोड़ा तुर तो हुआ है. Sleepy. People couldn't believe it. They couldn't believe that actually had just. That's Sleepy बैठा हुआ था. how Bleed lose the round. कौन सा मैप है? फ्रैक्चर. हाँ वो भी जीत गए चलो. Bleed are forcing the issue. अभी भी टाइम आउट नहीं लिया है ना कुछ नहीं. भाई खौफ ही नहीं है उसको. लेगिया बोलता है 12 भी लेगा टाइम आउट. लेगिया बोल रहा है मैंने तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस दी इनकी आगे ऐसी जीत. They are masters of the smoke as Good well. confident. Just चलो ये सेटअप भी अच्छा है. रॉफिल को एपी ऑफ दिला दिया. एक्स्ट्रा रन स्टैक हो गया. जी जर्सी गिव अवे प्लीज. भाविन भाई के पास है कि नहीं पूछो अभी. है ओके ऐसे नहीं. भाई भाई ये मैप जीते तो क्या बंडल गिव अवे बताना. नहीं लास्ट मैप का बोला था मैंने 9-3 कर से. तो कमबैक के लिए था ना वो भाई. और ये किसके लिए जीतने पे नहीं दे रहा. अभी दूंगा ना अभी दूंगा जर्सी गिव अवे करते चलो. जर्सी चाहिए या बैटल पास चाहिए तुम लोग डिसाइड करो. नाइस रे. बढ़िया. no need for skill. क्या शॉट है भाई. नाइस. अरे नाइस रे ट्रेड हो गया. मालूम पड़ा वो नसीब भाई दोनों. ऐसे एक और मारता है. स्कैरी को भी चिपकाएगा तू. भाई 11 HP कॉन्फिडेंस पर 100 HP का है. थोड़ा नीचे. अभी अजीज भी वाइड ही आने वाला है. नहीं फ्लैंक पे है ना रॉकी. Scary's just trying to bide his time because he's very much so aware that Rafael could नहीं रे. some pings on the map as well. He manages to deal with Aziz. So it's back to a 1-1. Backplant पे अल्ट है भाविन भाई. सुन लिया उसने. Through the teleporter, he will be able to stick that plant. Backplant पे वाइपर ने दे दिया है उसको. ओ भाई डैश मारा फास्ट पहुंचेगा अकरम. बट अल्ट तो पॉप हो ही जाएगा ना फिर भी. यस अल्ट वाला सीन. नेवर माइंड. ही डजंट नो अल्ट. If Asha was going to see. And he is going to use that ult. Viper's pit up. Rafael, what are you? Oh my God, he's going in for it, staking through. The cloudburst playing around, well swaps over to the classic, and he's just waiting for Scary to peek out. The decay is going to be down so low. He has been revealed. A single spray could end it all. Oh my God, he's playing with his food, man. Hello. OC हो गए OC. अजीज भाई थोड़ा. अरे 1v3 पे अच्छे खेलते ना. इजी राउंड था. अजीज थोड़ा ओवर एक्साइट हो गया. Again, that was अजीज दी टेसरैक्ट भी भाई. He thought that कोई बात नहीं कोई थ्रो नहीं लिखेगा. farther into the उनको भी खिलाना ना थोड़ा. Which again कोई थ्रो नहीं लिखेगा. is a very probable thing for Scary to do because he was unaware of where his opponent was coming from. But Scary, he knew as well that if somebody taps on that spike, he's already what's the word, decaying HP inside. भाई ब्लीड उसको आधा मिलियन दे रहा है. कुछ तो फिर एक राउंड तो निकालेगा ना. एंटी कोई बात नहीं. He could understand, acknowledge where Rafael was playing at. Just big 200 IQ. Expecting Rafael to do that as well, but now this time Bleed just again not quite the same exact default, but they're anticipating peaks out of OGS. Vandal था अकेला. Slowly bringing it back now, adapting to the way, the pace at which OGS ये मेरे को B simulator लग रहा है. managed to control B side. Spike plant. अच्छा. Will जाते रहो. retake. I mean, it's pistols as right. But to be fair, you don't also want to give. ठीक है थोड़े टाइम के बाद बी जाते रहेंगे वो लोग. तो लोग रॉफिल को अपलर के बिलोंगी लगाने को बोलेंगे. OG, I do know they want to get those kills. But किसी ने अकरम ने अल्ट एनेबल किया है क्या ये राउंड? हाँ और ब्लेक के शावर से खींचा है. ये नहीं खींचा. A good thing to try to utilize. Antidote though, okay, he's starting it off strong. The flash actually in the process. Juicy. He's the one who's actually welcoming them inside. Thank you for the so 200 Aditya Patnaik. Bhavin, can we see you? Can we see Anuj bhai and yourself in same team? Or you have some plans to prepare upcoming young player because your experience is invaluable? Oh, crazy guy. Thank you Aditya for the 200. अभी अनुज नहीं खेलना चाहते हैं मेरे साथ guys. कुछ नहीं कर सकते. Just a bit of damage. अनुज अभी. Bhavin, I have a question for you. हाँ झूठा. Very good. बोल दूंगा अभी सब बता रहा हूँ मैं. पता नहीं वो चीज़ सब बोल दूंगा. बोलेगा तू. बोल दिया. Where
I believe it was Fnatic that बोल मतलब क्या question तू मत बोल बोल सच्चाई बोल जल्दी बोल it's not bad if you're playing you're an Indian organization but maybe in long range not so much you have to you're still sign going to get tagged up and you're playing in VCL let's say for the next year ठीक है and you have to sign an Indian player but never mind who hasn't played in any split before use the Seekers and again as I mentioned the showstopper is going to be who hasn't played in any split prepared for this as they look to go for the push on the B side on the A side good reads from OGS अभी skills बोल के cheap answer मत दे देना वो allowed नहीं है skills ना वो answer allowed नहीं है मैंने अभी तो बोला मेरे को याद भी नहीं था कि skills नहीं खेला है teleporter has already been denied 5 players from Bleed all तो के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ अल्टी स्काई की अल्टी मारी एपी जाती सब भला पीछे गया रेसिस्ट है थोड़ा ये राइट अब पर उनको अल्टी पे सपोर्ट मिल रहा है Bleed's adapting. They're starting to believe. OGS still has that comfortable lead of the 10 rounds in, but it's slowing to dwindle. चलेगा मैं spawn को sign करता है MW1. You can already even see that Bleed they got themselves some lineups. The question का तू अलग वे में मत ले. Again, master. मैं तो chat पढ़ा अपना क्या वाकले ने भी नहीं खेला था वाला. सब cheating वाले आंसर मत दे. ठीक है बस कप्पा सब चीटिंग वाले थोड़े ऑप्शंस दे यंग प्लेयर्स के मेरे को वही तो बोल रहा हूं मैं कि अरे तो अभी ऑलरेडी इतने सारे यंग प्लेयर खेले ये वीसीएल में बच्चे कौन स्ट्रिक्स नहीं मैं स्ट्रिक्स को साइन नहीं करता एग्जिट हैकर लोग के साथ नहीं खेलता मैं as much as possible to either stall or to deny the spike defuse. So स्ट्रिक्स को मैं नहीं साइन करता क्योंकि वो फुल टाइम खेल ही नहीं सकता है तो क्या फायदा टाइम आउट आ गया ओजी का टाइम आउट आया रैंका भी खेला है टेक्नो भी खेला है when you're not the one on the attacking end when you're not the one pressing that advantage because again the biggest bunks when they were चलो छोड़ तेरे को लैंड पे सबसे इंप्रेसिव कौन लगा whoever you played against except but fight in a way that it's just your team and bit by bit just one player at a कौन से लैंड पे losing the अभी fight तो जो खेला अरे ये क्या है ये तो टाइम पास में खेल रहे थे अरे फिर भी सीरियसली खेल रहा था क्या ना तू तो नहीं रे इतना सीरियसली नहीं खेल रहा था थोड़ा सीरियसली खेल रहा था पर ऑब्वियसली अभी हम लोग एज अ टीम कुछ है ही नहीं हाँ कोई तो इम्प्रेस किया रहेगा एज अ प्लेयर डेडली मेरे को डेडली बोल रहा हूँ ये वन टाइप गॉड मेरे को पागल लगा पर पोटेंशियल है मतलब कुछ भी मॉली स्मोक के थ्रू भाग के आता है और वो अच्छे टीम्स के सामने नहीं काम करेगा पर उधर मार दिया उसने फोकस भटक रहे अपना ये लोग भी मैप हार रहे हाँ चलो चलो ओ जी बस ये वाला राउंड जीतेंगे देखो पावर चाहिए जी तो सब लोग चालू करो ना जी वैसा एंटी को जैसा नहीं हो कि ज्यादा पावर दे दिया ज्यादा पावर देते तो ओवर पिक करते बेशरम लोग ये अल्ट वाला राउंड है ब्लीड के पास अच्छा है तीन अल्ट से Speaking of RVK, कमाल के आरवी के भाव अल्ट लेके चढ़ जाएंगे आरवी के भाव उतर गए सीधा उतर गए परफेक्ट है जैसे तो इंफॉर्मेशन आ गई नो रोटेशन शॉट का अरे थ्रू मारा उसको What? Tiger here, quick little dodge from Rafael, but doesn't stop him from getting shut down. And Tesseract is by himself, can't really get out as all bombardment. तू perfect करता गया, perfect उधर हो गया. An absolute onslaught. लेकिन ये कैसे ये अजीज कैसे मारा स्टार्टिंग में? अच्छा वो स्मोक के बाहर आया. Very well closing that gap and bring them to that 8th win that they're looking for. RVK trapped inside of lamp, swings out. लोग फिर भी क्यों ट्राई कर रहे हैं ऐसे राउंड में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ओजी का तो पहले तो सेव किया था अच्छा खासा 3v5 में क्या पॉइंट था ये 2 गन तो बचाते नेक्स्ट राउंड के लिए अल्ट मार के 3 और ले भी ली becoming a lot more adjusting of how OG गॉड स्पीड भाई साइड में बैठ के स्माइल कर रहे हैं अभी क्यों गॉड स्पीड ब्लीड को सपोर्ट कर रहा है क्या बात कर रहे हैं हाँ एक्स कोच है भाई ब्लीड का एक्स है ना भाई छोड़ो अभी
but yeah, honestly मैं तो आधा सो रहा हूँ. अच्छा. Such would make sure that सीधा सच. from OG, so they could just again plant it for safe. They still had enough utilities for the. अभी mental game है. अभी अगर OG का mental strong है तो जीत सकते हैं. अरे OG का mental बहुत strong है रे. अभी देख one tap मारता है आरू के सब. राउंड निकाल सकते 3 अल्टे. सिर्फ 3 राउंड हो जाएगा गाइस. इस स्मोक भलता हो गया कि उसने किया है गैप के लिए. अरे बहुत ही भलता है. गैप के लिए नहीं किया है. बाप रे. फ्लैश में किया क्या? स्टन में किया. गाइस वो टैब वाला बग है ये. स्मोक नहीं है टोरिमस्टोन का. इधर चला गया. वो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है. They're waiting for Juicy to actually peek out of hookah in case someone is watching some angles. लिख के ले लो. OG will throw the lead. भाई तुम थोड़ी दे रहे हो कुछ. अगर OG ने थ्रो किया या नहीं किया. तुम दे रहे हो तो फिर हम लिख सकते हैं. भाई क्यों अल्ट कमिट कर रहा है अजीज? तुम एक आध बंडल दे दो तो हम बात कर सकते हैं. भाई 3v5 में क्यों अल्ट कमिट कर रहा है? वो भी शेरिफ है तेरे बंदों के पास यार. I'm not sure what Orangutan can do at this point. They're playing for the one and done angles. They're trying to catch. अभी अल्ट इकोनॉमी हार गया OG. के बाद वाला राउंड गारंटी जीते. नहीं पर अल्ट इकोनॉमी हार गया ना अनुज. इसने अल्ट थ्रो कर दिया. He's got the rifle. He's got a position here. पॉजिटिव हर जगह पॉजिटिव है. इतना भी नेगेटिव. अरे अभी गेम से लॉजिकली यार पॉजिटिव. Getting themselves an equalizer for a 10-10. सही बात है. अरे गन भी थ्रो. कोई बात नहीं. वो ना ऐसे ये थ्रो वो थ्रो अजीज अल्ट मारा इसलिए हारते. तू उल्टा कर सब कुछ. कोई बात नहीं. स्ट्राइक किया नहीं लगा. कोई बात नहीं अजीज. तूने सोचा तू 3 मार देगा. नहीं मरे. कोई बात नहीं. तू सरकार मां की आंख. अरे ऐसा नहीं चाहिए. तू कुछ मत बोल. तू और पार्टी में कुछ मत बोल. चुप रह. देख सच्चाई बोलूं तो अजीज 5 किल पे बैठा तो उसको किल चाहिए था बस और कुछ नहीं. अभी मारेगा अजीज ये राउंड पे. एक तो मारेगा. गाइस चैट में लिख रहा है तुम लोग सपोर्ट करना बंद कर दिए तो इसलिए हो रहा. अजीज ला 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 ला. आरवीके का मुंडी का है. मॉनिटर के अंदर. चश्मा आई थिंक सो पावर भी बहुत ज्यादा है उसका. They're again drawing out the utilities of Orangutan, who are more than happy to at least use it to delay them even further. Young talent में ज़ेफे कैसा लगता है? भाई वो बेचारा टैलेंट कहाँ है अभी? But with Crazy Guy having the orbital once again, they can do the same thing that they did on that A side push once again, which is to just. चलेगा रॉफिल का अच्छा एंगल है. डीप एंगल. Rafiel doesn't get anything and gets spotted. बस आप इस का ही रहे हो. भगवान रखे उनको ड्राई पिक करे. ड्राई. अरे कम ऑन. अरे नाइस रे. चलो डैश मार लिया. परफेक्ट. अभी भी नो इनिशिएटर. अरे कौन चलेगा. Big information for OGS. ये टाइम आउट आने वाला है. बस आरवीके का पुल कर. परफेक्ट हो गया. His teammate here to back him up. Juicy has to go in. 20 seconds is all that remains. The orbital strike command. नाइस रे अजीज. फाइनली. लेट्स गो. बोला मैंने अजीज एक मार. अरे लेट्स गो. Tries to shoot it through, but और ऐसा मैं बोला ना टाइम आउट आएगा. Godspeed sing again. ला 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 ला. Where Rafiel would be, and Rafiel did not disappoint. So that little bit of commitment. टाइम आउट आना चाहिए अभी because ये गलती हुई है मुझसे. For Orangutan, but the question still lies here. फ्लैश करते समय no time और they're still confident. It took a while for them to get rounds. Can Bleed still I mean, क्या ये कॉन्फिडेंस है या ये कॉकीनेस है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. बताओ अंदर की बातें तो आउटपुट क्या हुआ. अरे बताओ क्यों नहीं ले रहा है वो पॉजिटिव. नहीं लेता है वो कभी-कभी. नहीं लेता है. रीजन कुछ नहीं बताता. इसी बस पनिशमेंट है. उनका पनिशमेंट है. कोई पनिशमेंट नहीं कुछ नहीं पसंद है. ये भी अच्छा है. नाइस रे. नाइस प्ले रे. उड़ाओ रे. वापस से साइला उड़ा. बस इनिशिएटर खत्म. अभी क्या
अभी भाग के जाओ। एम पे आएंगे। चलो। अल्टीमेटली नहीं है ना क्रेजी गाय के पास। नाइस रे अजीज। और शॉट अजीज। बस चलेगा चलेगा। Orangutan have teleported D to make that noise. It's also the it's also the spike here from Crazy Guy, but he's doubling back. मत आ रही के मत आ। मेरे को पता है इधर। एंगल बहुत गंदा है लेकिन। Are not being baited by this. अरे simultaneous picks. Dorian and Scary find Tesseract and Antidote. RVK, Heroics through the smoke. They're right beside each other. And not gonna happen at all. Raw fuel with the operator. That was a tricky play. That was a risky play from Bleed. अब लगता है उल्टा टाइम आउट आएगा। It's smart. I mean, they're so confident again in how they हो गया खत्म। मैं सो रहा था क्या तब? Teleport through. Cut noise, cut time. चलेगा गाइस। हाँ ये अच्छा थैंक यू चलेगा गाइस। कोई बात नहीं, नेक्स्ट बाय है अपना, टोक देंगे इनको। पानी पियो। मैं एक लाइन बोलने आ रहा था, बोल नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम से वॉच पार्टी नहीं मिलेगी मेरे को। क्या बोल नहीं सकता बोल रहा तो बोलते क्या। नाइस रे अकरम का कॉन्फिडेंस काय हाय। ईद है भाई, ईद में मत आओ। ईद में आओगे तो ईदी तो मिलेगी। ईदी चाहिए, ईदी के लिए आ रहे सब। अकरम भाई एक लेफ्ट स्विंगर डाल दो। लेफ्ट स्विंगर नहीं रे, आउट स्विंगर। क्रिकेट नहीं आता मेरे को। आपने को अल्टी चाहिए, अल्टी किसके पास है? किसके पास है? कोई बात नहीं, अजीज ने उनको ईदी दी थी अल्टी, अभी वापस आ जाएगी उसकी। हाँ आ जाएगी। अरे मत लो, गंदा फाइट हो गया। अरे चलेगा अनुज, मारेंगे अभी। देख अरे उड़ा दिया। अरे देख बोल रहे तेरे में ही नहीं, तुम लोग अभी हंस रहे हो। शर्म है क्या तुम लोग को? The teleporter's been denied. Raw fuel stuck inside of this with an operator of all things. He's just trying to dodge some of the nice रे. 2 players left. Raw fuel managed to punch through. Darian still pushing all. अरे बोला ना मारेंगे, चने लोग ये लोग चने। वाइपर अल्टे साथ में खेलो, वॉकिंग करके प्लीज। प्लांट में देना उसको। भाई ये बहुत स्कैरी प्रोस्पेक्ट है। हाँ बस उसको सिटी के क्लोज नहीं मारने देंगे ना तो राउंड निकाल देंगे। पर आ गए I think Scary waited too long. Is he gonna play inside that? He just got the ball inside the smoke, I think. But no, right in front of him. They're cooking. He doesn't expect cooking. No, What? Not possible. You can't do this. बोला ना स्कैरी का प्रोस्पेक्ट बहुत। He was on the spike. He was on the spike, Asteroid. जब उसने अल्ट चालू किया तब भी क्यों नहीं स्विंग किया? उड़ा देता ऋषि। हाँ तब बेस्ट टाइम तो स्विंग करने का। And the one thing that separated RVK from clutching that is that teeny tiny box at the back of देखो वो तो मैं he slow peeked it प्लेयर की गलती and he नहीं whipped the बोलूँगा। shot. He got one bullet off. And that is precisely why. कोई बात नहीं। चलो निकालते। भाई आज वहीं पे 2 किल मारा था, उसके बाद मारा नहीं है। OGS doesn't win this round. ऐसे सब नहीं बोलते, मारेगा वो। ऐसा काउंट नहीं करते का स्पीड। कोई बात नहीं। भाई आजिज का तो काउंट करना पड़ता है क्योंकि आजिज ही मेन है भाई। वो बंदा जो मोमेंटम लाके देता है। अभी इन लोगों का कितना और 4 मैच है ना, इसके बाद 3 अरे टाइम आउट लिया भाई। तो 11-11 पे लिया। 11-11 पे क्यों लिया भाई? नहीं देते अभी पूरा गेम हमको। तो मैं ऑप्शन F6 दबा देता। अनुज भाई F6 नहीं दबा सकते आप। नेक्स्ट टाइम टीम से निकाल देगा F6 करके। F6 सॉरी, हम लोग यूफो के साथ करते थे। यूफो को हम लोग ने बीच में कोच बनाया था, बोला था बस कुछ पैनिक होएगा, कुछ भसड़ होगी अगर टीम में तभी टाइम आउट लेना। भुसड़ी वाला कुछ भसड़ नहीं हुई, टाइम आउट ले रहा था। नहीं था तो साइबॉग था ना VCL में, स्प्लिट 1 में ग्रुप स्टेज में।
तब का नहीं, ये बहुत पहले की बात है। नहीं, मैं तो अभी का बोल रहा हूँ। मैंने बोल दिया था लोगों को कि साइबॉग अगर टाइम आउट कॉल करे F5 दबना चाहिए। टाइम आउट लेके क्या बोलते हैं? सांसें लो लंबी लंबी गाइस। टाइम आउट लेके बोलता है बहुत अच्छा खेल रहा है, ऐसे खेलो। मैं बोला भाग तेरे टाइम ऐसे करके लोग टाइम दे रहे हैं तू। और बोलता भी मस्त तरीके से यूको, गाइस तुम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो। हाँ ऐसे खेलते रहो, बस हो जाएगा। प्यारा इंसान है भाई। ट्रैप बना के बैठे पर ओजी भी पुश नहीं किया। नाइस। Well, at least it is that Let's go, OG. It is 11-11, so OG! This round win, obviously, whoever gets this will dictate if they'll push. we have to go for. हाँ, उन्होंने expect किया कि OG push करेगी। 2 prowlers already spent towards A short. Scary heard that. No information, yeah. Scary heard all of that. Walking in towards Rawfuel's angle. Rawfuel's not in a spot where मुंबट डॉज करने के लिए। भाई एंगल तो एकदम इंसेन है। रॉफ्यूल का क्या है ये? He's quick enough to go around the corner. He has to use the blades to actually just get away. मतलब इंसेन है, अच्छा या गंदा? मतलब गंदा। हाँ। कंफ्यूज हो गया था एक बार के लिए। मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे जाने की जगह भी नहीं। They don't get hit by the TP nade from Aziz. चलो जल्दी आ रहे। ट्रेड हुआ। कौन सा मूवी था ना तुम्हारे हवाले वतन साथियों? 11-11 पे ओवर कर रहे लोग। नाइस अजीज। भाई यही क्लच बंदा है, ये बंदा बहुत क्लच बंदा है। He shuts him down instead. Oh, they found out of the game. 2 on 3, 5 seconds remaining. Can you stick? Plant ही नहीं होता है। I do not think so. Perfect. Let's go. Overthink. Oh my gosh. अरे ठीक है, नहीं आ रहा यार। टाइम आउट नहीं ले रहा था। इतना उनको लेट करवा दिया, सबका टाइम ही नहीं बचा। वेरी गुड, लेके एक और टाइम आउट बचे तेरे पास। पूरा मैप में नहीं, एक और ले। भाई देखो अजीज भाई का अल्ट आ गया। ये राउंड दिस इज अजीज राउंड। अजीज क्लच बंदा है, ये मैप निकल गया। एक और टाइम आउट ले। ऐसे कुछ तो ये मैप निकल गया, अजीज निकाल देगा ये मैप। That came through here from Neff to actually just punish बोलते हैं impact anybody frag। that's playing. लेकिन वो गलती से टीपी हो गया उसका। That just close position angle because that's जब मारा है तब राउंड जीता है। Again, used to. अल्टी है, जूसी के पास अल्टी है रे। चलेगा, अजीज भाई के पास भी अल्टी है। एंटी के पास भी है। बहुत क्लोज आ गए कुत्ता। थोड़ा ज्यादा हो गया एंटी। RVK last one on the site. चल अजीज अभी अजीज 3 मार सकता। Oh no! My God! And a third. Aziz with the showstopper. He tries to go for that Hail Mary. बेचारा एक भी नहीं उड़ा। Tries to go for a couple of taps. Gets a double, but that was it. We are going to overtime. Rafael was making waves, man. He got a couple of picks there. I thought they were actually lining up. भाई एंटी को ऋषि बैकअप क्यों नहीं दे रहा था? This one will go to overtime. This will just go to straight to game 3. I think so. ऋषि ने कॉल दिया होगा, मैं फॉल कर रहा हूँ। वो ऊपर से भागा ना ऋषि? हाँ तो फुल भागा एल्बो तक उसको एकदम पावरफुल आया रहेगा। पे चढ़ रही करके। चलो गॉड स्पीड आप बोलते हो तभी जीतते। मैं तो भाई गा दूंगा बस। अभी दूसरा वाला अजीज से तो ठीक है। वो हु करो। वो तो मेरे से होता ही नहीं ढंग से। ओजी नहीं थोड़ा अंदर से नहीं। ओजी ऐसा था ना। हर हु के बाद ब्रेक आता है हर। आप ऐसे करो। ये हुई ना बात। चलो भाई पर ग्रैंड फाइनल्स में मजा आया था मेरे को स्प्लिट 1 वाले में। ये अनुज की गलती है, ये मैप का जो भी है। अनुज बोला था 9-3 का एक का कर्स। Maybe just swayed OGS from just pushing right in. Did Aziz use his nade already? Yes, he did. If he pushes through this with the show or with the double satchel, there's like 3 players that bleed willing, waiting and wanting to do that. जंबल्ड अप थे, अब फिर भी ठीक है। आप सही भाई अजीज भाई जल्दी एल्बो तुम लोग खेलो। अरे भाई अपने बंदे अटैक है भाई, क्या हो गया? नशा कर रहे हो क्या तुम? ओह सॉरी ऐसे सॉरी भाई। मैं बोलूं क्या हो गया इन लोग को? अरे अनुज भाई ने बोला अजीज का नेट गलत हुआ तो मेरे को लगा। अच्छा तो जूसी का पपल रहे। वेरी गुड जूसी पपल और पपल। But they've saved up Scary's wall. There it is. Yep.
नाइस रे, डबल एंट्री बोलते उड़ा, इसको भी उड़ा। अरे अजीज भाई, अजीज को स्पाइक दे दे भाई, अल्ट भी आ जाएगा भाई। फिर एल्बो चले गए थे तो बहुत बढ़िया, ऐसे ड्यूलिस्ट एल्बो जाके छुप गए थे वो। चलो वो भी बिना नेट के, नेट भी नहीं है तो फिर एल्बो से कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर डाल के आने वाले थे। One more round. बहुत तगड़ा राउंड भाई अजीज भाई जी। ला 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 ला। गाइस जो भी ओजी को सपोर्ट कर रहा है लाइक ठोको, देखे 2000 लाइक करते हो कि नहीं। 2000 लोग देख रहे, लाइक 1500 है, शर्म आ रही है तुम लोगों को? मतलब सिर्फ 1500 लोग ही अपने को सपोर्ट कर रहे हो ओजी को, हाँ, 600 लोग हैं ना साला ब्लीड को सपोर्ट कर रहे हैं। 700 लोग। आदमी ऑनेस्ट रहता है, मैंने भी बोला था कि मैं मेरे को तो मतलब आप ब्लीड डिसलाइक कर सकते हो, जीतेगी, बट ऑब्वियसली आदमी चाहेगा ना कि तो 600 लोग डिसलाइक कर सकते हो, कोई बात नहीं, भाविन भाई सह सकते हो उतना। ये सेटअप इनका वर्क किया था, ये सेटअप वर्क किया था, वापस से करेगा। अरे नाइस नाइस, बच गया, भाग भाग जा, हील ले ले टेस्ट रैक। सर्वाइविंग वेरी गुड, रन रन, बढ़िया बढ़िया। छोड़ दे, मैं तो बोलता हूँ बी साइड पूरा टेस्ट रैक, भाग के जा। नहीं ऑप पे और हील ले ले, ऑप लगाया ना, उसको जाने दे, इसने ऑप लगाया कभी से। भाई सुंदर बात छोड़ दिया, कब बी साइड हील लेने भागे। They need someone to just clear up the angle here, but it's only. और भी बोलो, कुछ और भी बोलो अनुज भाई, देखते हैं। अभी रॉफिल मार देगा इसको और फिर ना ये स्मोक कर देगा हुक्का। बस हो गया इन लोग का खत्म राउंड, परफेक्ट। ऐसी स्मोक्स आएगा, उसका स्मोक जाएगा। ओह मारा 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 ना, आरवीके ने मारा। कोई बात, अरे बाप रे, बहुत मेहनत हुआ पर मार दिया। एक बुलेट आरवीके, कम ऑन, एक और। नाइस रे यार, नाइस ट्रेड, नाइस ट्रेड। And OGS could very well do this. नहीं क्या किया? अरे! He's on for the triple. Showstopper pulled out. Rafael. He holds the angle, finds one more. We're back to a 1-on-1. Swaps over to the Vandal now, but Spike still. निकालता है अकरम, निकालता है हेडशॉट एंगल पे, सामने वाला भी। The tailwind proc. He has to peek up, but does not know where Juicy is. And look at how he's creeping up for his look. Nice! निकालता है बोला रे। अरे डिफ्यूज कर, लेट्स गो। ओजी to map 3. Powerful. Both teams फाइनली भाई feeling hella brave in forcing those kills. Very good anti, nice clutches. They wanted to chase down. हाँ एंटी के 3 क्लचेस बहुत बचा है भाई, साइड से वो। चलो गाइस एक और, अभी अनुज, अभी एक बैटल पास अनुज की तरफ से गाइस, और लास्ट में आज आधा डेडलॉक, नहीं आधा डेडलॉक दे रहा है ना तू। यस अब मैप, ये मैप के बाद पूरा फुल डेडलॉक ले लो, फुल डेडलॉक। हाँ चलो courtesy of course of Orangutan. चलो एक्सक्लेमेशन ओजी, बस इतना ही लिखो, एक्सक्लेमेशन ओजी। नहीं वो नेक्स्ट मैप के बाद, हु नेक्स्ट मैप। ठीक है, एक बैटल पास गिव अवे करेंगे। Just a quick gander onto the highlights, and you're absolutely right. Just I can't believe that was what we saw. तुम odds पे क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ सॉरी किया भाई, खुद ही जीतेगा। गाइस लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। बोला ये आधा डेडलॉक मेरा। फ्रैक्चर भी अच्छा है रे ओजी का, बस अजीज भाई चलने चाहिए, फ्रैक्चर में बहुत मारते हो। नहीं पर गाइस टू विन यू नीड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू। के साथ कॉम्पिटिटिव रहना बहुत जरूरी था आगे के मैचेस के लिए। हाँ हारे उतना मतलब नहीं है मेरे को आज का मैच का, बिकॉज आज का मैच हमारा टारगेट है ही नहीं। अगर हमको प्लेऑफ्स पहुंचना है तो लीड के अलावा जो बाकी टीम्स हैं उनको हराना पड़ेगा ही। सही बात। देखो गाइस ट्विटर को 15,000 पहुंचा तो एक और बैटल पास गिव अवे करता हूं। क्या करें अभी देखो 13.8 के है गाइस, तुम लोग 2000 लोग तो देख रहे हो। ठीक है, ये गेम के एंड तक है यार। ट्विटर 15,000 पहुंचा दो, एक और बैटल पास गिव अवे। चलो गाइस रोल करेंगे इन 10
9 8 7 6 5 इस समय को ऐसा नंबर नहीं पता 600 तक आंकड़ा पहुंचने दो 4 3 2 1 0 एग्जैक्ट 600 पे हुआ है साइका दास आर यू देयर ब्रो ओ भाई बात राजा लगाया क्या साइकत आपका इंस्टाग्राम आईडी बताओ I am the Raja. I am the Raja na. Saikat Das 327. Okay. तो साइकात हमें फॉलो करते हैं पहले से before winning the giveaway से ओके कांग्रेचुलेशंस साइकात ठीक है अभी नेक्स्ट गिवअवे थर्ड मैप के बाद मोस्टली देखो गाइस 15,000 करो ट्विटर पे ठीक है 14,000 काफी क्लोज है तो अपन और भी ज्यादा कुछ बड़ा गिवअवे करते हैं चलो बैटल पास को छोड़ के भी और कुछ गिवअवे करते हैं बंद करो बस बंद करो स्कैम गाइस I am the Raja. जर्सी गिवअवे चलो साइन जर्सी गिवअवे करूंगा अगर 15 प्लस एक बैटल पास ठीक है अगर 15,000 पहुंच जाते हैं तो अगर 14.5 पहुंचते तो बैटल पास तो दे ही दूंगा 15,000 पहुंचते तो एक साइन जर्सी दे दूंगा चलो नेक्स्ट मैप कितने देर में अभी बस 2 मिनट में चालू हो जाएगी देखो 13.8 से 13.9 तो तुम लोग ने कर दिए क्या है तुम लोग के लिए कुछ नहीं है इसमें 2 मिनट आया सोच रहा हूँ कुछ खाने को लेके आओ गॉडस्पीड भाई कैन यू टेक ओवर द चैट प्लीज यस यस फॉलो गाइस व्हाट्स अप गाइस क्या लगता है फ्रैक्चर में क्या होगा Ladies and gentlemen, फिर रियल एमवीपी देखा मैंने बोला यार मैं सपोर्ट करूंगा तो जीतेंगे ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा की वजह से ही तो जीते हम against all odds against that first map orangutan what makes you go into esports brother love I've been gaming and competing since the age of 10 मेरे को मेरा प्यार है there's no superstitions here on the desk right now but bleed what a second half to at least I think it was crazy I mean you think about Instagram पे रील्स अगर देखोगे कभी मेरे मैं आजकल बहुत शेयर करता हूँ अपने स्टोरीज पे तो देखोगे शाहिद कपूर ने एक चीज बोला था कि गाइस जो चीज
तुम्हारे दिल को खुश करे ना वो करती रहनी चाहिए, चाहे उसमें तुम्हें 5 रुपए मिले, क्योंकि वो 5 रुपए जो तुमको मिलेंगे उससे तुम्हारा दिल भी खुश रहेगा और तुम कोई ना कोई तरीका निकाल ही रहोगे, निकाल लो। You played games while studying for CA? Yes. Can G win LCQ? Honestly, chances थोड़े कम है यार, because to the start of the game, I also want to go back to the start of the second half. प्लेसमेंट की वजह से ब्रैकेट्स थोड़े से अजीब हैं, बट हो सकता है, definitely possible. Couldn't convert in those second rounds. They would have won this series 2-0 if they did that 100%. They would have had a chance to go for those bonuses, but that just goes to show how crazy OGS can play when they have those sheriffs in their hands. Look, RVK, shout out for him doing big impact, even though it was only 16 to 18. But as you mentioned, honestly, just so strong, so prevalent in SW, and Juicy as well. Yes, he's 33. भाई मतलब भाई कि मैं कैसा इंसान हूँ, when they were 5 rounds down, 2-7 scoreline. Like, कैसे हो, long time no see. Hello Proton. Godspeed, you completed CA? Yes brother, I am a full-fledged CA. So much so that sometimes he feels himself so gets so 5-6 साल हो गए and peeks out and dies to round in that final round. It's crazy, it's good, it's a lot of fun, and that's why it pushes us to that third map. Career to To me though, I think one thing really persists, honestly, is that OG अभी जब VCL ऐसे खत्म हुआ और जब मैंने LFT पोस्ट डाला तो सबसे पहला जॉब ऑफर्स मेरे को CA के ही है, ट्विटर से। हाँ, They made attacker sided for sure. Certainly looked like both it, teams, yeah, crazy. And then look, OT. We've had way too many OTs already here in a second. Look, let's just go for another one, huh? Fracture, great place to do it. Why not? They were ready to match. मेरा God screen का साथ. Rely on how they utilize, at least for the first half. Gaming sphere से भी आए, ऐसा नहीं कि नहीं How है. well they utilize the capabilities अच्छा 5-5 लाख खा रहे हैं offers पे Watchparty. the sky to allow But यार to allow the duelists to do what मन नहीं है वो सब करने का. मेरे को किसी ने बोला जनरल मैनेजर बनने, 9-3 rounds. नहीं मन है यार. It's so crazy how strong they are. एक ही चीज आती है मेरे को, लोगों को गाली देके सिखाना. हाँ, कोचिंग ही आती है अभी फिलहाल, और कुछ नहीं आता मेरे को. Once they started to figure things out, Raw Fuel first of all landing those op shots. अब वो भी ढंग से नहीं कर पाया मैं. Finding opening, But forcing them to kind of readapt their strategies, and then और जो also सच है वो है, RVK actually stepping up, coming into ultimately it is all coming into support down to the some of these plays. A coach की responsibility. An additional He has to how they take defend. the burden on his shoulders. थोड़ा. नहीं, मैं बोल रहा कि I noticed like the differing every defeat teams is का वेट हमको उठाना ही पड़ना चाहिए, मतलब उठाना चाहिए. You know, one-on-ones in 1vx scenarios, and that allowed Bleed to win so many of those clutches and get that economy sorted. But make that do you have any leaks on skills or Kappa? What will they do? No, brother. Look, in fine fashion too. You know, there was certain rounds. I think hope they I tried 5 did. together at one point, and each of those 5 rounds there was 3 alive, 4 alive, flawless rounds coming through. So they had small things I know, but it is not my place to say those things. They were doing a similar thing, but it feels like when they're running time their their structure is much live stream it's just much better to trade. देखो भाविन भाई ने यहाँ पे स्ट्रीम पे बुला लिया, हम सब यहाँ पे बैठे हैं. ये बेटर नहीं है. जो भाविन बोलेंगे हम वो करेंगे. क्या करूँगा मैं लाइव स्ट्रीम? एक बात बताओ, 5 जन 5 जगह पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, क्या ही फायदा होगा? But only when they're playing together. अगर तुमको इतनी खुशी है was only there in तो जाके सब्सक्राइब कर लो मतलब के चैनल को, मेरे चैनल को, ये सब कर. There were multiple times when Bleed was on the मन नहीं करता यार, बिना बात के मल्टीपल स्ट्रीम्स क्यों ऑन करें, मतलब knowing that पता Orangutan नहीं. loved to play the मेरी close angles. सोच थोड़ी अलग है उस चीज. RVK was just no, Aziz was for the sake of it नहीं करना ना मेरे को, मतलब just popped out inside the smokes, couldn't just see streaming for the sake of streaming करके फायदा नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू एडिशन हो रहा है. आप सोचो, आपको एक स्ट्रीम पे तो इंडिया के 2 of the most experienced players and successful IGLs, एक ऐसा IGL जो बहुत पहले से लोगों को नर्चर करके आया, दूसरा एक ऐसा बंदा who took the responsibility of becoming an IGL while
मतलब having मतलब while making hours and making time for family and everything. और वो sacrifice बहुत बड़ा होता है. मतलब people underestimate that sacrifice, but I think you have brilliant examples here on TS. It's also a little bit, peculiar that इतना अच्छा value addition हो रहा है. और वहाँ पे मैं और मतलब बेकार का ज्ञान They rely a little bit more on the IGLs to go for those mid rounds. And speaking of mid rounds, every time there was a man advantage for Orangutan, they were getting frisky with it. I'll put it that way. There were so many moments, especially towards the end of regulation, right? In that final round of regulation, round 24, they decided to just crumble under the pressure, go for individual attempts at the. Bhavin sir, Anuj sir, Malav sir, and आप हर मैच में ऐसे Watchparty क्या करो? देखो यार. They had that moment to regather themselves, say, "Come on, guys, let's play this together." तुम Valorant के बारे में पूरे दिन बात कर लो मेरे से. भाई कोई chat में डाला अनुज भाई married है? What the fuck? हैं? Yeah, that's the thing. How will they fare in a similar way on a map like Fracture? Their composition is one where they play double. वही बात है ना कि लोग अपने struggles उतने highlight नहीं करते हैं यहाँ पे इंडिया में, because पता है कि अपने struggles highlight करके कोई फायदा नहीं. It was very important for them to put Aziz on something as fast as an agent. But जिनको पता है उनको पता है struggles किन लोगों ने क्या-क्या struggle की. How much comfort he did have when he was playing on that raise. Now गेम के साथ स्टडी मैनेज हो जाती थी. देखो यार, नहीं होती है honestly. अगर तुमको मैनेज करना है ना तो तुम 6 चीज भी मैनेज कर लोगे. But the thing is, to compete and to study at the same time is almost like saying goodbye to your social life. That's what I felt. Yeah, I had no social life, brother. Yeah, and not many people can make that sacrifice. Not many people can actually go for that. Like, it sounds like nice, but yeah. Again, बिल्कुल सही. But India में, if you want to pursue esports, उस समय पे as a you had to pursue it as a passion या hobby. And वो passion या hobby के लिए time तुमको normal अपने काम के अलावा निकालना पड़ेगा. That is the sacrifice you had to make back then. Every pro here who has been in the scene for more than 5 years now is from an era where people were not paid to play. Yeah. People had to pay to play. Okay. Yeah, fair. Darian on towards the Sentinel. This is something that we've been talking right about. now. I feel like there is also a sense of sort taking things for granted, I haven't seen from that the new batch. It's usually the fade, and it's the same reason why you don't see Sobas on. Well, now it's a job. Yes. A little bit too slow when you want to set up. So I mean, I would. What better than making your career or your passion a job? Like that is the dream for anyone, because there is no need for you to be motivated enough to work extra hours if your passion is your job. I never had to be motivated to work more than 12 hours a day, or to, go through sleepless nights अगर मेरे को चाहिए as a coach. क्योंकि I love this. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. And I don't think so यहाँ पे बैठे किसी को भी कोई फर्क पड़ता है, because हाँ, obviously you have to treat it as a job as well. But at the same time, I think it's easier for you. Yep. And I believe that's exactly why Orangutan is able to come back, keeping their mental solid. I think it's a huge privilege to be able to pursue esports as a career right now in India. मतलब अभी तो it's much easier. पहले जिन लोगों ने pursue किया था, it is a huge मतलब privilege, और वो privilege ऐसे ही नहीं मिली है. It is through sheer sacrifice and hard work. The amount of sacrifices people have made, they just don't tell you, because I feel like that's one thing that they definitely covered. What I do like about Orangutan, like you mentioned, I think it was also in the intro video. I think it was Antidote that was in the interview. Finally, Power of Friendship for Orangutan. We're gonna show you that as a team. So I love it. We're seeing it. It is blossoming in one of the most honestly stressful matches I think they could have ever done here in the और कहाँ से किधर से किधर टॉपिक चला मतलब आया जस्ट ऐसा सब बोला कि क्या चालू है कुछ चुप रहा Honestly, the best of friends, the PF, arguably the
favorite out of the way first, and you're doing this well, that's Let's where go, things Bhavin, can continue to go right later on during this group stage. But the game, it is here, map 3, we're jumping straight. अरे अच्छा थोपड़ा है भाई, निकालते हैं अपन. It's going to be a damn fun time, and I can't wait to see what the South Asian individuals have for us. It's going to be hype to say the least. Look at how they're already cheering on ओए खुद तो चिल्ला team. है ओजी आवाज है इधर तक जय और लोग सब है ना उधर. हाँ ओजी का पूरा गैंग है. We saw those statistics, 70+%. ये चीज बहुत पसंद है मेरे को ओजी के, पता है पूरा फैमिली जैसा फील आती है. सीन तो मस्त है. But the one thing that we are curious about, Asarai, is crazy guy on this. Darion Killjoy, let's go. Will there be lineups? Will they be that effective? I feel like it has to be. There has to be. There's no reason why he won't go for something tricky when he's known as the Sova player, again, from the Bleed roster. So, that being said, Orangutan start off slow, not really just running in. You do see already RVK holding outside of RK. It's a standard play you do see from a Sentinel here. If he gets any contact, he can always just zip line back to his team. But at least for now, he's trying to. उल्टा अच्छा अटैक चालू कर रहे हैं. वही ब्रो लीड बना लो इधर ही पूरा. Coming in from OGS, we talk about their attack. अरे रिकॉन की. Already made their way. उनको साइफर ना नहीं पसंद आता है. On the other hand, are just watching the angles. They've been smoked off. So this is मेरा going to be a full retake setup, right? Full retake, but you can already see the damage done. Oh! Can they stop the post plant, or can they actually punish one that was like fracture with the way damage already here, man? Well, I'll tell you one thing. So low, but there's still the crossfires. Smoke's being placed. Aziz spamming, hoping to hit a shot, but it's not going to happen. They're just hopping up towards, knowing that they're upset at tower. And look at how the squad operates. 2 more on towards the other side. Now looking towards 3. Every single person is here. They are kind of low though, so RBK has a chance. Is Deadlock the first agent in the game without a rechargeable signature? Just tagged up enough for Darion to collect on the third. हाँ मैं बोला था मुझे साइफर इसलिए पसंद नहीं आता, मेरे को था ना लास्ट टाइम कब देखा रहेगा किसी की कोई प्रोफेशनल मैच में कि ट्रिप पे कोई आके किल मिला रहेगा. इन्फॉर्मेशन देते हैं नो डाउट, बट ट्रिप पे किल मिला है क्या आज कितना बहुत रेयर होता है. तो और वही किल जो है ना गारंटी तेरे को होल्ड देता है कि एटलीस्ट दो मोलोटोव पॉप होंगे तो होल्ड देगा. प्लस उसका जो इन्फॉर्मेशन है ना 2 ट्रिप वाइज देते हैं, उसका टरेट और है ना अलार्म बोर्ड देने ही वाला है. तो मेरे को इसके लिए ना वो टाइम पे किल जो है पसंद आता है. Just because उसका ट्रिप्स पे ना पब्लिक बहुत ज़्यादा बोलते ना और सिक्योर हो जाती है ऐसा कि हाँ हम लोग को ये तोड़ के जाने का है, कोई नहीं आता. तो मेरे को एज अ सेंटिनल होल्डिंग पावर लगता ही नहीं उसका. लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई प्लेयर स्ट्रॉन्ग रहेगा जिसका साइफर पे आते हैं शॉट रे ये सब तो बहुत अच्छा है. बट ऐसी रैंडम साइफर ना मेरे को तो दोनों ही नहीं पसंद. Like the loud comp because you don't need a sentinel because flying coach fully possible नहीं है ये map पे. मतलब I don't think any sentinel is currently strong enough कोई भी map में. So you like the Viper sentinel comps like on a double controller? Up in a double controller या chamber. Trying to run back. Darion has a shotgun in hand. मेरा despite not having, but he's got a ghost. So like fracture जैसा map है ना, actually still covered in this weaker buy है ना, उसकी वजह से you don't want one player to be playing constant rotations. That's all he wanted to do. 2-1-2 setup skill ना unequal बहुत easily हो जाता है, right? Because like 3-2 या फिर 2-3 होएगा with one rotation or something like that. तो Cypher वो Cypher का setup split करने को मतलब एक trip एक side डाल के अच्छा इको है नाइस इको. It's very easy. नाइस इको. प्लांट भी मिल गया 2v1 में. 3 गन ड्रॉप हो गए. हालांकि 2 ही गन ड्रॉप हुए ना. धीरज ने उठा लिया किसी का जज. नहीं धीरज का जज था ही पहले से टावर पे. जज था और घोस्ट भी था. हाँ समझा मैं मालूम तुमने बोला, लेकिन उसके लिए फिर वो इंडिविजुअली साइफर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वो सब करने के लिए. ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा मतलब नॉर्मल अगर उसको खेला ना तो नहीं है अच्छा. बोल रहा हूँ चेंबर ब्रोकन है भाई. अभी भी ब्रोकन. He is on the A site though, and everyone else is somewhere else. You got that judge though. It's gonna be OGS now, just trying to walk their way. Nice. The game Aziz bhai maar do isko. Perfect. It's going to be OGS on towards the B side. What are you gonna do now, Darion? Oh, nice trade, right? There's no range. Crazy guy is just hiding inside of a sky smoke. Crazy guy का तो classic ही है. So I don't think. Godspeed bhai आप पीछे हो. No, you are so wrong, Quack. Oh my God. You are so wrong. He has a lineup.
I hate to be the bearer of bad news, brother, but that was a smoke. Cyber cages, and he just bam with the classic, and he's still भाई इसको भी टकला फोड़ा आरवीके को भी try of the plant of the spike. I don't think they can do any more damage other than this, but we've been wrong like a couple of seconds ago. We could be wrong now, but OG, they're pretty aware of where their opponents are going to be. Beyond just not enough. Well, firepower inside that Spectre to take down Ando, but he's down too, so that's pretty close. One's close. I got a little bit scared, man. I'm not gonna lie. Oh my God, Bleed still strong despite being on, you know, eco buys from the previous round. And it's a good bit of economical damage. It does force the Beast to go for the light shield buy, but at the same time, you know, we were talking about the ultimates. Tesseract's got his Rolling Thunder. Darian's got his Lockdown. Would you prefer instead of like Tess on Breach, do something like what NRG do and put Victor on Killjoy? Orangutan on their attack, when they go in together, like what we saw the Breach maps, and then Tess plays Killjoy and anti or RVK can pick up. Anti most likely can pick up Breach. Definitely more on the B side. Maybe because there's more impact when you use but the double deal is I think. But भाई लोग सिटी फाइट करने जा रहे थे क्या? There was no smoke on generator there, so you're basically उनको थोड़ा roll in flexibility तो है. A show of force from Bleed. You challenge us, we will challenge you right back. Can you beat us? Killjoy alt का इसके लिए उन्होंने strat बनाया था पर. हाँ. Unanimous vote from across. Wait, observer change हो गया क्या? On the side of Bleed. Observer change हो? क्योंकि left hand दिखा रहा है अभी. He has a spike. नहीं ये सिर्फ इसी में दिखा रहा है ना? So it shows the player का thing. Test ने change किया. इसने change किया. For someone to peek out. There are 40 seconds left in this round, so he has to make a move. Spots out crazy guy. But look at all these players. CS में याद है कैसे करते थे left right. The first, but still down to 16 HP. The peaks have to be immaculate, but instead it is going to be that suck dart. Crazy guy has been blessed by official chat बंद होगी religious comments की वजह से. हाँ बहुत Legolas, yeah. This man is not surprised. He's just throwing out the bow, the arrow, and he's hitting. This is supposed to be a game with guns, but this man is bringing out the basic technology to bring down the opposition. उनको CT लेना नहीं था, उनको CT smoke off नहीं करना था ताकि वो Killjoy ult नहीं करे. नहीं fight में कुछ तो डालते थे fight से. It's going to be Bleed still. They've got the buys. OGS has the ultimate, but they can't quite use it yet. And look at the setup. Just peeking out of चलेगा कोई नहीं guys. Three players from Orangutan making their way outside of bench out to arcade. But Darian is still lying in wait with the judge. Aziz. अरे अजीज भाई उड़ा रहे हैं. लास्ट गेम के बारे में ये चीज अच्छा लगा कि इन लोग विदाउट अजीज फ्रैगिंग जीत गए. पब्लिक बोलती है ना कि अजीज ही कैरी करता है, वो अच्छा लगा मेरे को कि भाई जब वो नहीं मार रहा था फिर भी गेम जीत गए. भाविन भाई बोल रहे रिजल्ट जो भी हो कुछ भी हो टेक्निकल पॉजेस नहीं आए हैं. मेरा मुंह बहुत सही है. हां keeps throwing out his shot there. Do you think it's wasteful? पांच अल्ट है ओरांगुटान के पास. I say wasteful. But what I like about that is if you actually charge out as Orangutan through a main, right? It's not only to see if someone's there and have a free way of opening the door so that somebody can actually peek, but if someone gets caught in that, it's like 75 HP if your health bar just gone. Yeah. If you don't respect it, so I like it. It's like an in case kind of thing, and in this case with how Orangutan plays and Bleed, it lands and it connects. Orangutan though, this round, all 5 ultimates online, and surely Bleed have got a read for this, and that's precisely why they are playing so far back towards the Defender spawn, towards Dish. Thought it was going to be a pull of the Hunter's Fury here. Full armor liya hoga satchel actually, ke the baad. whole of OG has saved every bit of utility that they have to throw at this point. Quack. It's prepared. It's there. But no one's home. Nobody. Knock, knock. Nothing. And that's why Bleed fully had a read on this. Trying to go in for a bit of spray and swell. But not going to be able to find anyone. Control liya. आने साले लीड वाले पता था वो. Out the Hunter's Fury from Crazy Guy. Okay, I like this from Bleed.
Do we rotate? Do we double back? Look at where friggin' RVK is. True. He can always call back his teammates. Wait, where did he get him? Through the door! Did he actually open it once again with like a shock dart or something? In any case, even if because RVK, as you mentioned, has gotten that B control, it's going to be on the other side of the map. But the big problem here, brother, is that they've used so much already. They don't have any more smoke. नहीं मेरे को लगा मार देगा एक क्रेजी के भाग के जा रहा था ना उसको मारने. मेरे को भी वही लगा कि भाई बोल लेना. Antidote has got his orbital strike as well. You guys, true. This is possible. But I think so. ये round secured है अब. आरवी के को भी करके को मारना है. दो को मारा तो मस्त. माँ की आँख आरवी के. ठीक है अभी भी एंटी खेल सकते हो. भाई अभी तो नहीं खेल सकते यार. नहीं खेल सकते. Such a damn good read on this, but नहीं आरवी के बहुत closer for the orbital though. Crucial था वहाँ. Nah, it's just gonna save. Yeah, no. And this whole round starts with bleed. उल्टा बोलूँगा. Outside of A main. कोई बात नहीं 5-1 ही है. Such a good read, such a good play. कल फैंसी ने तो कहाँ से comeback किया. From ORANGUTAN too. Are we going to use the orbital to break the Killjoy lockdown, or are we going to use it for the post plant? Bleed, don't give them much choice. Don't even give them time to choose. To be honest, they're already pressing. Exactly. As soon as it gets planted, this is going to be crazy guy pushing down into tree. I don't want to play Bleed again in Fracture. It's too scary. It's Bhavin भाई क्या कर रहे? And again, like we're just thinking about it. जीतने के लिए. Thinking about how the Sova utility plays out. It works. पहले तो मैं ये देख रहा हूँ ले गया chill कर रहा है. Now we're converted. Problem है कि अच्छी बात. Operator being pulled out in this round too, right? Yeah. अपने लिए problem है. All right, doctor, what do you got? What's the medicine? What's the prescription? It's the prescription indeed, because these guys are sick of having to just play around. I think थोड़ा अपने को bleed को pull around करना पड़ेगा. इधर करना पड़ेगा. They're trying to get through, right? They're finding certain angles. Default करके pressure create करके. Hello के पास वो Killjoy का ropes use करना है अपने को थोड़ा. What the setup play is मतलब डिश पे प्रेशर डाल के रस्सी पकड़ के वो साइड चले गए. मेन प्रेशर डाला, आर्केट प्रेशर डाला, जो भी है. Precisely what you're about to do. And that's the biggest thing. So that's why this timeout is called. Doctor has to come up with a brand new strat or something that, Bleed has to adapt to. They need to find that momentum. And this is a big problem right now in this first half, because this is ORANGUTAN's attacking side. We talked about how strong they should be right here. And it's not quite happening, Asura. It's 1-5 right now. These भाव ने gun क्यों लिए? ORANGUTAN's got like 4 ultimates to still work with, but it feels like if you're on the ORANGUTAN nice ray. Alright, I take that back. Alright, Rafuel, star of the show and Bind. Star of the show still here on Fracture as he picks up a pick, or picks up a kill. Okay. Trade for trade though in ORANGUTAN. Is he picking up an operator from Durian? With ulti. Use ulti. Nice ray. Got it. Tesseract finds one through the sky smoke as well, and all of a sudden OGS has the sight. That was like creating a storyline here where they have 4 ultimates and they can't use it, and then Rafuel just takes out the blades, and the whole landscape changes. Aziz, what was that? That was fun. If he's feeling snappy, maybe he can Let's go. OG out of nowhere just bring out a Thrifty. Like this right there, showing it. Flying across the air. I mean, Rafuel get that heads-up duel. OG. Something that Bleed did not expect, and that's exactly what you need. Sudden burst of confidence, and now maybe the momentum to their side. They win off of the Doctor's timeout. Coach, of course. So 2-5. Bleed. They still have enough in the bank to buy up the exact same loadout. अजीज भाव को अल्टी यूज करना चाहिए. बहुत देर से चल रही है. अभी अपने को 2 राउंड और निकलने पड़ेंगे क्योंकि ब्लेड का पैसा तो बहुत है. आ जाएगी अल्टी वापस. अजीज भाई यूज कर दो. Decent with the operator itself. Okay. Nice pick. Perfect. Showing off once again. अकरम भाई ईदी ले लो. Time and time again, Rafuel. It's in his name. It's there. He's the fuel that OG needs
to give them that boost. अभी जाओ अल्ट खोल के अजीज भाई. Through the smoke, there's the showstopper, and boy. भाई मरता कोई नहीं है इसके अल्ट से. ना डैमेज पड़ा अनुज, एक पैसे का डैमेज नहीं पड़ा है. अरे वो सैचल के बिना अल्टी हो रही है ना, पैसा चल के आ रहा है वो रॉकेट लॉन्चर हाथ में लेके. पास नहीं भाग जा रही है. Now here comes Juicy. Crosshairs trained on towards the site itself. Neff, throw in the Rolling Thunder. Why not? Darian just comes back out, and that's going to be a क्या घुमा है? कहाँ से राउंड कहाँ चला गया? Rafael got the starter, but पहले problem तो I is even think if they get all these first kills, the mid round as Matt फर्स्ट was पिक मिला. talking about it, प्लांट the कैसे भी नहीं हुआ conversion इतना देर after तक. the क्या first blood, स्मोक्स था सब still तक not there. 19 How सेकंड का did बीच Juryon का स्मोक even में प्लांट figure कैसे out? नहीं He हुआ? was just right in front भरोसा of स्मोक में गैप है maybe रे he heard अपने. him through the footstep, through the smoke. दो बार इन In रो any गैप है, case, नहीं होना चाहिए. It just again just crumbled whatever OG Orangutan wanted to do on the B site, and unfortunately that's gonna hurt because it's 6-2 already. That's one of those. अपन लोग नहीं कर रहे रे, अलग अलग मैप पे ऑब्वियस प्रेशर कर रहे हैं कि मतलब इधर आ रहे तो इधर ही आ रहे. थोड़ा साइफर को थोड़ा छूट दो, केज कैमरा करके थोड़ा प्रेशर. इको राउंड में दिया उसने, पिक निकाला, पर एटलीस्ट लोगों को तो वहां पे रखा. पिक नहीं भी निकाले तो इधर. Expecting Orangutan to make their move. Wow, Bleed are not on tower. Juryon's just like, आप देखो ना भाई भाई, टेलीग्राफ इतना हो रहा है कि उनके प्लेयर्स ऑलरेडी रेडी हैं आके. वही तो बोल रहा हूँ कि अपन जिधर दिखा रहे उधर ही बस जा रहे हैं. और ठीक है, साइट मिल रही है हर बार, ऐसा नहीं कि नहीं. हाँ, साइट नहीं मिले तो तकलीफ है, साइट मिल रही है तो जीतना चाहिए. because of that alarm bot too. But thankfully, conversion, post plant, अच्छा जगह प्लांट किया. Hopefully. Well, that's the tricky thing, right? Because Orangutan, they have to go towards post-plant positions. And this is where those orbital strikes, those utilities from Bleed will come in. A bit of an orbital nice strike lurk from Antidote just to push them back and Bleed. यही करना पड़ेगा इनको. Retakes now, being shut down outside. Perfect, RVK. Because of this big flank from RVK. Darian. Nice रे, nice पकड़ा इसको. Scary tries to shoot back. Still sharp on the aim, and a couple of players from Orangutan are kind of low, but the jump from the tower is something they did not quite expect. Turnaround, but still trying. 6 सॉल्व तो करना पड़ेगा. Let's go. हो जाएगा. Rafuel is, I don't know, man, how to call him. Like, he's the miracle man. He's the make it happen dude. The playmaker. Thank you. That's such a great word. This is why you're my co-caster, because you're the English guy. No, okay. The merry man. Yeah. The miracle man. Yeah. The make it happen man. I will say though, he's done it before. Again, I talk about how their conversion is going to be after that first kill. This time, Orangutan are slowly building that understanding, which is incredibly important. And now that Juicy wants to go in for a head-to-head battle, he needs the help of his teammates. Thankfully enough, Neff was there for that quick little refrag, but OG... अरे मटका? Oh, ऐसे उड़ा दिया रे स्मोक के थ्रू. They know that there's so much commitment. इससे आदमी बहुत टिल्ट हो जाता है ये सब. But maybe they wanted to go through B main to punish Bleed there, but Neff was prepared, or someone else from Bleed was prepared for that pinch of Orangutan. So much going on that making educated guesses as well. Now information spotted out. Oh wow, that is so smart. Well timed with a flashpoint just to save his teammate too. Hooray. Antidote flushed out. It's going to be scary striking them down. RVK, last one left alive, trying to run his way through tunnel. Doesn't want to reveal his position. Swaps to walking instead. Silent steps. Does it allow him to find the first pick, because he needs to find these one-on-ones. Scary just watching the angle. अरे टकला फोड़ा था रे आरवीके ने भी. Burst through the wall. Silence was deafening there for RVK. He wanted to get for a pick. He wanted to get something, and he actually almost got it. The damage on Scary was good. माही इंडियन ने कुछ पूछा आपसे भाई भाई. क्या was पूछा? able to retaliate swiftly and quickly enough. इसकी वाली जी और आपकी वाली जी सेम है क्या? नहीं guys. To cross as the nade was being thrown out. I know it's just a simple thing,
but it's huge. I mean, it allowed who was the Scary to get SK वाली जी franchise वाली है, हमारी local league वाली थी. Away from pushing B main, multifaceted from just the one utility usage from Neff there. MG है भाई. 21 और की जी. But going back into it again, it's just how Bleed adapts to Orangutan. Earlier on, so much Bree presence, and that's why we have 3 players. Orangutan trying to adapt right back. They make a sudden hit on towards the A site. Guess what? Nice reaction. Raw fuel reacts in kind. पर फिर भी मतलब टेलीग्राफ वही कैसे बोलूं वो निकाल रहा है इंसान हाँ पर नहीं तो इंडिविजुअल एबिलिटी पे निकल रहा है मतलब कॉल में मजा नहीं आ रहा है ये बार and then the quadra 7-4 this is getting closer. Rafiel's mad. कुछ नहीं बोलूंगा मैं कुछ बोलने वाला था नहीं बोलूंगा. He said the sentence, I feel like behind the stage he's just saying to his teammates, fine, I'll do it myself. Follow me, I shall lead the pack, I shall lead the charge. And Rafiel, it's all there and it's his name, he's fueled up. That's the thing, I mean, you as that duelist player, you need that ego, dude, and he finds those moments where he really steps भाई it निश्चल up, मेरे को मालूम नहीं मैं ये बोल opens up सकता हूँ the कि site, नहीं and it's a good read from the IGL antidote as well. Deciding to hit A. This time we're back towards the B site because they're anticipating the adaptation from Bleed. So 3 stack on A, they push out, they call it clear. OG has to make this site hit happen because if not, they have to watch out for a big flank. Rafiel goes in for a spam. The Vandal not quite finding it. Darren's still alive, goes in for a jump, but not quite able to connect the judge shot. So here it comes now. Clear out defender spawn. Surely they have a read on this, but Juicy with the stab through the sky smoke again. He catches Rafiel. Star Duel is gone. Spike planted though, and Crazy Guy tries to flush them out of the corners with the Hunter's Fury. Look at how OGS are just holding this down. तीनों इन लोग flying पे ही है. पता लग गया ना उन लोग को तीनों तो देख रहे हैं. All the players of Bleed were playing on B main, so they get the call to get another angle to attack. We can't just push it. All of us, and Crazy Guy pops off. 2K. You think I need? भाई सामने वाला कुछ कर भी नहीं रहा है. अपन ही. Vietnam represent. Crazy Guy saves the day second for Bleed. उसकी गलती मतलब नहीं है सही है उसने मतलब मारा तो obviously swing करके मारने हाँ पर इसके पास दोनों केजेस आधे के पास पहले ही डाल के रखना जब वो स्मोक में स्प्रे कर रहे हैं रिपोजिशनिंग के लिए या उनको अंदर थ्रू आने के लिए जो भी है पहली सी हो गया कोई बात नहीं उसी ने तो 8-4 लिख दिया था तेरी चैट में He needed to make some noise. ऊपर जाके पकड़ता हूँ ओ भाई इसको तो अच्छा आरयू को स्प्रे में मार दिया इसे That's sick. That on the wall bank पड़ा फुकट में आरयू को गाली दे रहे Sorry आरयू के my bad कोई बात नहीं आरयू के अभी ये ना सिटी साइड पे ना साइपर कम चलवा दी ट्रैप में अटका के उड़ा रे बीकेएल को Bleed के लंगूर को was building up steam just when Rafiel was leading the team to again that great momentum that we saw just shut down. In any case, still not too bad considering how difficult it was to traverse all of the setups that Bleed have basically laid in front of us. They showed us what they got on Fracture this early on. That shows how much they really want to showcase their dominance, if not also their respect against how Orangutan have been dominating Fracture on their own side of the world. Yeah, right? Like these traps here and there, but at the same time, it has to happen right now. This is अजीज भाई चलने चाहिए अभी तभी जीतेंगे अजीज भाई बहुत मार रहे थे इधर find that wind right off the bat, get that boost. ध्यान दे मैंने एक लाइन बोली थी कल गॉडफ्रीड को हाँ मैंने बोला था कि इंडिया में लोग उसको फार्म देते एक करके उसके एम में आते मरते रहते ऐसा नहीं बोल रहा वो खराब प्लेयर है पर जो जितने उसके स्टैट्स थे ना लोग उसके सामने उतना ही खराब ऐसे एक करके जा रहे पर इन लोग ब्लीड वाले लोग साथ में जाते हैं तो साथ में जब जाते हैं अजीज को मारने को मुश्किल हो जाता है ऐसा
it's a smart decision because, again, pushing out through A main and Sands might not be too good when the nade is there. And this is going to be very swift. The pinch is also there from the 3 players of Orangutan. But Bleed, they decide, let's just push the full 5 inside of the site. Juicy might get cut out here. He only has the classic. Gotta be careful because there's about 3 players who have eyes on you, and Aziz will not miss. Wow, a second one as well. The paint shell's right behind to make sure that he doesn't have to deal with too many players at once. Lord, Trying to find those right clicks, gets denied by देखना एक-एक करके पिक मिला तो मार दिया उसने. Kill under his belt now, and that's going to be the last 2 players from Bleed trying to defend against. भाई देख मैंने गलत तो नहीं बोला पर ठीक है. Hiding on the other side of the sky, smoke up by tree, spotted out by Rawfuel. And for the 1v1 में तो दे रहा है. मैं बोला ना उसको एक-एक करके फाइट लोगे तो मारेगा. बहुत अच्छा है उसका शूटिंग. पर जब साथ में लोग उसके पिक करते तब सेम नहीं है ना बात. I think him and Rawfuel have been just at the precipice of getting that ace. They want to one-up Juicy, if I'm being frank here. But, man, fearless again. All about that contact, all about that bravado, the confidence. And Aziz just oozes it in spades. Well, 8-5, not too shabby. Orangutan get themselves some nifty buys, but did Bleed just force buy? They did. Light shield all across the board, so this Marshall could be deadly. Thank you. Paint Shells buys a bit of time. Still the footsteps coming right around the corner. All 4 players. ये round निकालना है कैसे भी. And then a Darien outside of A main. Oh, Now Recon Dart's going to clear a good chunk of the A side as well, so it's going to flush out anybody inside. Tesseract somehow manages to find Durian through the mess of things. And Juicy, okay, make a bit of waves here, but not going to be enough as he gets caught out of unawares. 3 versus 3, smoke dissipates, and Rawfuel doesn't miss the chance to actually hit the shot. Still very much alive. But so are Bleed nice players. RVK. Trying to find some stronger positions, but hearing the door, RVK. Nice! And that's going to be Rawfuel pushing out from the front. Let's go! Fighting back, not backing down. User joined your channel. Of course, that's Orangutan, man. They're built to just and they're built to succeed. 8-6 Bleeds risk. They want to go for that force buy. I don't know if it blows up in their face, but at least the Bleed dwindles down even 2-0 मतलब Bleed की तरफ से कप्पा OG की तरफ से. They can still go for some thrifties. We've seen OG do it. Why can't Bleed? But in any case, OG, they're starting to build up a lot of steam, especially in the back as well. Online नहीं है ना, वही अच्छा है. These retakes this time as well. Everyone back to back, playing with each other. I mean, yes, Aziz is the one leading the charge sometimes, or Rawfuel, but they always have someone behind the trade. नहीं रे, क्यों अकरम? This though, peeking out of tower by himself, Neff shuts him down with a Sheriff. That's going to be the Bulldog donated over to Bleed. And aside from that, it's the entire site just. Direct shot लिया गया. हाँ, pick किया तीनों के सामने. Tripwires there though. Scary. He's good. Okay. All right, he's a mastermind. Trying to plant inside Dice, not gonna happen. Scary though. Oh, is he still alive? How is? Okay, never mind. I was just saying, nice. how is he still able to survive all of that? Never mind. Aziz closing in. अपने लॉन्डो ने भी सामान मस्त किया. Nice. Basically thrown to the side. Let's go. Public की आवाज आ रही है अभी मुझे चिल्लाने के लिए. Is able to feed them all of these kills and feed them still around. ये तो ये सब setup तो इधर वाले use कर रहे हैं. Safe मैं use किया वही. I like it. I mean, he stayed alive way longer than he should have. He was moving, but Bleed got the punish. Yes. वही किया ना. Of course, Orangutan. Sorry, Orangutan got the punish. My bad. They get it off of Bleed's force buy, and that's kind of what you have to give up if you go for that bit of a gamble. So 8-7 now, 3-round wins in a row for Orangutan, and they managed to buy up so many big guns. But here is the full buy from Bleed. If they continue off with this momentum and they find another round, Bleed are in trouble. Wait, hold on. I saw Nanoswarm pop underneath the feet of Scary, but there's only Durian as the KJ. Was I wrong?
Did he just pop his own molly in front of underneath his own teammate? We'll check that on the replay later. Maybe one of our co-talents can double check it on the stream. But in any case, if that was what happened, misplay. Aziz, I like this. The position is there, nice, and he has Tesseract right alongside him. They don't need it. They don't know that he was just tucked inside the pocket, but Neff finds it 1-1. Showstopper was so close, but denied as both raises are done for in this particular round. Looked at just the right time too. So 1-for-1 trade, and the aftershock utility doesn't quite catch them. Spike will be planted. Bleed very much so holding the post plant positions now. They're anticipating the push coming out. Darien just watching the angles. Here comes the trade. Oh my God, Rawfield though. This time leading. Arey nice re Akram. Crazy guy. Darien tries to sneak out of it. But ultimately gets choked down by RVK. 8-8. Eid Mubarak. Eid लेके जाओ तुम लोग bleed वालों. Little by little, OG is building that steam of theirs. All from just, again, holding it a little bit. No need to fight when your opponents are still transitioning in. ये अपने को भी पहली बार अपने को मटका मिला उनको नहीं. Playing on the side, if we play our cards right, if we just hold off just a little bit, we can use all of what we've saved up in the retake of that round, and you do see that beautifully. And then Rawfield just shows to us his vast experience as a Jet player, having all of these angles, even through smoke. चलो finally bleed वाले ने लिया time out. मेरे को लग रहा है Godspeed तो सो गया है. Godspeed? हाँ Godspeed? हाँ सो गए थे ना? I'll find a better word. Okay. For now, that's what I've heard that one so many times. I know. It's kind of burned out because obviously. चलो आप जीतते हैं. But yes, I mean, it is किसको बोल रहे हो आप जीतते पहले वो बता दो. हाँ ठीक. And it's very interesting because there is. गेम के स्टार्ट में तो आप कुछ और बोल रहे थे इसके लिए. हाँ नहीं देखो गेम के स्टार्ट में तो मैं वही बोलूँगा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा. नहीं मैं पूछा आप सपोर्ट किसको कर रहे हो. मैंने आपको वो नहीं पूछा था जीतेगा कौन. सपोर्ट तो यार वही है. ले दे के करना तो हमारे बंदों को ही है. दोनों का खाया है. Attack hasn't been working out too well. They managed to get spikes down, but not the post plant win. Yeah, it's been really, I think, just Tesseract still being alive as well. It doesn't show too much on the assists, but the amount of stuns that he has thrown out that have made Bleed a little bit more cautious has also been a big factor here for Rawfield. And speaking of Rawfield, this time he's feeling a little bit frisky with the operator here, feeling very brave with it. And Juicy's just about to swing, but thankfully there is music बंद करो, game sound दो. Contact, he's stunned. Nice there for the swing, and Bleed is just going horribly wrong for them. Oh my God, Rawfield still doing it all. Nice. Now Bleed down to 2 players remaining. VCT South Asia channel में अभी ठंडे हुए कप्पा इससे पहले तो वाउ कर रहे थे वो लोग जी. वाउ. डबल किल मार रहा है कुछ है नहीं कर रहा है फाइट नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है. And it just favors Orangutan. भाई कल रात वाले गजब थे कोमोडो. वो लोग मस्त है वो शेने वाले. Site itself instead. अरे म्यूजिक क्यों नहीं बंद हो रहा है? Scary's done this before. हेडशॉट इरिटेट कर दिया. At least he's had the Viper Pit to fall back on. This time, I mean, if he can get the plant, maybe the orbital strike, he's pretty healthy. Does have a weapon if he can deal with RVK. Maybe he can pick up a rifle or something, but... नहीं भाई, ये round Scary नहीं निकाल सकता. This is just wishful thinking for Scary. OG have definitely turned the tables on this one. That camera has been active 100% of the time. Just... Okay. He actually broke it. I thought he was just gonna try to go around, but nah, not this time. Scary. Does he have a smoke to play inside? At least to play faster and further, but no. Molly's gonna be used. 9 bullets in the chamber. Can't really do anything. ult use करेगा क्या ये पागल आदमी होगी. Against the other players of Orangutan. बोलते ना उसको 1v1 लेने का तो करता तो. हाँ. पर क्या स्पेक्टर से इतना लॉन्ग रेंज किधर वो ult use करके भी राउंड निकालने वाला. एक दो किल मिलते हैं तो बात अलग है. 9-8. Not too far for Bleed, but so far it's great momentum for Orangutan. It was good on the first half because they had lineups. But this time, you're missing. They're kind of missing the secondary flash.
or the secondary utility that can actually force something out. You're right. If you compare the Sova drone, okay, it's slow, it can get you the खतरनाक information, ultis है but अभी it's अपने not पास like the उनके पास भी Trailblazer. मजबूत It's not बैटल like दोनों ये जो अल्ट बैटल जीत गया ना away from the nearsightedness. There's no threat to that. So पर अपने पास बहुत पैसा है, अच्छी चीज है. OG is in just challenging it. Oh my gosh, are they gonna die to the orbital strike setup? अरे अरे अटका दिया उसने अपने सैचल से अपने बंदे को. नाइस रे. And it just pushes them in towards Rawfill. आराम से kill. He is waiting और for टैग हुआ है. another op shot. And he takes down Crazy Guy. Still very much alive on the site. They try to spam him out, but they can't find him. Bleed don't have an answer to this, right? मस्त कॉल भाई. डॉक्टर का था, एंटी का था, जिसका भी था अच्छा कॉल था. Goes to show how much pressure Bleed is in, starting to crumble against OG. Durian thought that it was going to be a free site, but Tesseract lulls him into a false sense of security here. Neff and Juicy to remain 40 seconds and they're still wanting to fight for this. Might need to actually just save the weapons mayhaps, but no, they're really going for the aggression, but it's not going to work. Nice! It's not going to happen. Oh, बढ़िया. Orangutan 10-8. क्या बोलते भाविन गिवअवे होने वाले बहुत सारे. डेडलॉक गया. डेडलॉक तो गया. Orangutan again making their voices heard. Yeah, I'm hearing those gorilla growls. भाविन भाई तेरे बंडल मैं तो दो भाई काय का बंडल मैंने बोला ही नहीं. कुछ भी बोलता है. मैं बोला 9-3 से कमबैक हुआ तो बंडल दूंगा तभी वाला बेशरम. अरे ओजी पूरा सीरीज जीत गई तू एक मैप में ही बैठा है. उतना पैसा नहीं है. चुप कर. भाविन ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा यार. ये बेचारा जूसी दोनों अल्ट काके बैठा है भाई. Can't find any form of like, I'm concussed guys, what am I supposed to do? Oh मारता तो. Antidote push spotted. Juicy not missing the chance to punish. That's a big deal though. That's a big thing. Still has the nade available. तीनों है अपने पर इधर. राउंड अभी भी निकल सकते हैं. Spots it out, but Juicy can't really hit the shot. Nice Tesseract. Another one. Second one. Orangutan, they're not the only one that can dish a fist full of just aggression. They can do the same. And at least that catches Orangutan off guard enough to force him. guys, अभी अपने पास almost पूरा game बाय तो है. Let's try to get this clutch. And I mean, how can he? 30 HP with the operator, but he's been confident. He wants to go for his exit frag, please. Clawed back into the game. अरे पब्लिक बोल रही है मैंने चिंक्स कर दिया. ठीक है उल्टा बोलते हैं. नेक्स्ट राउंड ओजी हारेगी. अरे अभी तो ब्लीड पूरा 13-10 जीतने वाले गाइस. हां जीत गई. कुछ नहीं कर सकते ओजी. अगर ऐसे ही है तो ऐसे ही चलाते हैं. डिसेबल क्यों है? क्या डिसेबल्ड है? YouTube के स्ट्रीम का. Smart plays from Bleed. अच्छा पता नहीं. And it's not over yet. 9-10. 9-10. There's so much. हार गया ओजी हारेगी. नहीं कुछ नहीं कर सकते. If OG loses players, they can just keep buying. दर्शक ने इंजन मारा दूसरा शॉट. हाँ. नहीं भाई. Same kind of egoist duelist effect. बहुत गंदा पड़ा. We saw it from before, right? Rawfill was the one doing it. This time it's going to be Juicy, and that's the story for today, I think, because these guys are doing it all. At the same time, though, look at the light shields. अपना पास विम्स्टोन अल्ट नहीं है ना? के पास अरे वो रेस की अल्ट कब से रे भाविन दर्द हो रहे हो देख के मेरे को. हाँ. बहुत डाल दे ड्रोन. They gotta be careful. अच्छा इन लोगों को इजी वाला प्ले करना देख रहे थे. स्टन नेड और अल्ट वाला. Showstopper with you clumped up as 4, so not something Bleed want to put themselves in. And look at how they're slowly going towards B2. Almost trap फंस गए थे. ड्रोन नहीं होता because they know there is an operator on OGS's side. And that's very likely going to be Rawfill on B. अच्छा ट्रैप नहीं टूटा था. Eliminate the trip, but it's just a little bit shy. Going through tunnel instead. Oh, are they trying to flank onto Rawfill? आरबी क्या बी से पुश करके ए पे पहुंच गए. Alarm bot to protect it. आरबी से पुश करते करते सेव डिश पे गए. Are they going to go the other direction? Because I feel like they shouldn't. They should try to just at least get as much control on the B side as possible because the lockdown forces everybody back. It does happen.
This is, it works actually. It's what we've seen before. Oh, DROs. Hunter's Fury, a blind random one, actually catches Tesseract on the rotation. दो बार ropes ले लिया, वापस ले लिया. This time, it just delays OG enough on that retake that they decide to save Aserai. बहुत पैसा है रे अपने पास. ट्राई करना चाहिए बार. नहीं जब भी नहीं ट्राई करना चाहिए था जब भी जा रहे थे. Force out the ultimate from Scary. That's a win in my book because at least that's something that they don't have to worry about coming into the next round. Actually exit तो मारना चाहिए. OG at least they've caught. But सेव भी सही है रे. उन लोग के पास है ना. इसके पास ऑप है. Scary के पास अल्टी है उसकी. ऑप सेव कर पर अल्टी राउंड. मुश्किल नहीं अनुष. अगर समझ तूने 2 किल भी मार दिया और स्कैरी का अल्ट बेट आउट करा दिया. हां तो नेक्स्ट राउंड right in front of OG, the saying, we got this, we're facing back, we're fighting back. Fighting back. I gotta be honest though, I'm definitely perplexed by how OGS ran back on that one, but still, 10 to 10, we are tied up. I think मेरे को वो रेस को ना अल्टी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए. बहुत मतलब मैं बोल रहा हूँ कब से वो 4th 3rd राउंड से भाई 3rd में ना मेरे को निजी की याद दिला रहा है. निजी की नहीं होगा यूज तब तक त्रास है वो इजी के लिए. I guess if you think about it this way, they didn't wanna. They want to have as much money coming in. कास्टर फुल ठंडे है. हाँ थोड़ा अभी हो जाएंगे गरम. So maybe, I mean, again, I think this secures them 3 rounds of sure bias, right? I guess so. So at least if that was the ideology behind that for Orangutan, it does make sense. And again, if they were feeling like they couldn't really clear enough angles, especially with time not on their side, it's not the worst thing for them. They still have those buffers. Both of them are just, again, up at this point, neck and neck already, so there's no real need to risk something when you don't really have to, which is also quite interesting since we're speaking about Orangutan, right? And this is why I have you as my co-caster. That makes a lot of sense. But still, I mean, again, it comes back to those adaptations because now we're starting to see a Harvey के make out कर रहा है monitor से. गोलू भी वैसे ही है. Trying to kick it to the 11th gear. Make out बाप रे क्या सोचा है. Public लिख रही है मुझे तो क्या बोल. Conversely though, they also know how to go in with those mid-round adaptations to find Rafael with his operator and maybe just plant lockdown to work around that. So tiny positional changes from OGS. This time it's going to be Rafael up towards Dish and then 2 players, Aziz as well as Tesseract, peeking out of tree. Oh, there it is. The aggressive push. What is this? Gets called out. It was a shot of who was just better at hitting through the smoke. Yes, but it goes in the favor, of course, of Bleed. Tag on the trip. On paper, that would have been a sound play, but Bleed just being smart and getting a feel for it. Orangutan now trying so desperately to stall and defend. All of those smokes being deployed incendiary as well. And then they hear the footsteps. They're going to rotate forward, but what they don't know is that Darian is right around the corner. Darian might need to back away though, because Tesseract is hungry and angry for the kill. He's playing with food, and Darian actually just chokes up. Nice. जीत तो गया पर Bleed is there. Bleed is so fast. Like, I thought they were actually pushing through B main and not help out Durian, but it's the opposite of that. They went the other direction, and now they're playing for contact. They're playing for trades, but OG is able to just bring it back once again. But look at the damage done to the HPs. And I think this time they have to actually go for the fight. And the ultimate spent by Scary as well. Gives them the sight. अरे दादा. It's those angles. Like you mentioned, देखा ही नहीं यार ठीक. Tunnel vision हो गया रहेगा. Advantages angles either. Rafael down to 15 as well. That's painful. It's another operator saved up, and it puts Bleed up ahead by 1 round. 2 more away from closing this out. Man, चलो guys. Rafael बेचारा lucky हो रहे हैं. ला 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 ला. हाँ ना वो लगा रहे डिश पे लगाया और नहीं है ईमेल लगाया उससे पहले नहीं है. ला 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 ला. नेक्स्ट राउंड बैठेगा देख Rafael के ऑफ में एक बैठेगा. There are 3 players trying to pick up a set. Thankfully he'll save that operator, but again, La 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 this la can la. go either way.
There you go. Again, they still have money, like I mentioned. Up good enough to buy. कुछ नहीं तो खुद के ऊपर ही मार दे अल्ट अजीज पर मार दे भाई. I was so surprised. मेरे दिल को तो सुकून बैठेगा कि हाफ पे स्टार्ट से लेके बैठा है. बहुत वर्ल्ड तकलीफ हो रही है देखते वो अल्ट ही है. निकल तो जीत जाएंगे. Oh, Tesseract's there. He's been trying to chase Dorian for like 5 seconds. I have enough time to actually go through underground. ये राउंड निकल जाए तो अपने पास अल्ट्स आ जाएंगे आगे फिर. Tesseract का थोड़ा टाइम है एंटी का. More trades in their favor and winning out the round ultimately as well. Yeah, and that's just so smart and so fast with how they respond to these things. And then the pace switched up again. Now they're going slow. We've got Darian on another lurk. Surely they're aware that Rafael is still on the operator, but the question is which angle this time. That's why they're being so careful about it. Yeah, they're much more respecting of Rafael's operator now. Because they know, once they make that mistake, once Rafael starts to heat up, oh, Aziz committed. They don't even have to push if they wanted to. They can play inside the smokes and just try to alleviate, dodge, duck and weave the players of OG. Rafael's had enough. Again, they're going to press their hands. That doesn't feed them. It actually starts to press them to lose, but not going to happen this time. And OG, they fight back. All around the side too. अरे कैसे भाई एंटी का भी टकला फोड़ दिया. बाप रे. भाई क्या ये भाई वो जूसी ने कैसे आरवीके को मतलब अजीज को मार के इसका भी टकला कैसे फोड़ा. 10 HP पे 4 लोग को सुला दिया उसने. सुबह बॉटम फ्रैग कर रहे थे 8 फ्रैग पे 7 पे बराबर ये राउंड उसे फोड़ के मारे. जो भी मतलब ऑलमोस्ट फोड़ के उसको भी 140 दे ही दिया. Calm yourself down, sorry. I mean, he's stepping up. I mean, like अजीज पहले ही नेड मार देता तो राउंड निकल जाता. And that makes the biggest difference for Bleed in these rounds. अजीज लगता है यूटिलिटी नहीं है भाई. और उसने तो अल्ट मारा है उसको. This is now Bleed at match point. पता नहीं मारना क्या इसको. OGS, they saved up so much. They have to do it right now if they are to win this first series. Their debut match in VCT Ascension Pacific. अरे नहीं. It's going to be risky. It's going to be quite difficult. Oh, Juicy! No way! Juicy just showing you us what you got the mobility with the double satchels. He's got the showstopper. He's got the whole enchilada. And he is serving up a dish that OG cannot stomach. Oh, it's going badass, Sarai. Rafael tries to pull off some shenanigans of his own. He's making a lot of sound, though. Just a bit of a tag, and it doesn't quite give him the image that he wants. Nice. RVK, with the support, will deny Juicy. 2-on-2. And he knows that Darian is pinned down. Trying to go for the defuse too, but here comes Crazy Guy. A bit of a lineup. It takes out RVK. Oh! Tries to go for the turn instead, and then the swing out from Bleed. अनुज भाई ने जीत किया. हाँ यार. बराबर. 10-8 पे बोला सीरीज जीत गए. You whip a shot with the operator, and you see how hard these players can punish you off of चलेगा एंटी ओजी एंटी. Brought out his pistol. चलो एक और गिवअवे आप लोग के लिए कर ही देते. Dorian immediately just crossed the angle. Was already कोई बात नहीं गाइस. अपन ओजी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी सेलिब्रेट कर सकते हैं. Crazy Guy was so far away, but he अच्छा had खेला. ऑलमोस्ट एक दो राउंड इधर उधर to just tag them if they were already on the spike. एक और बैटल पास गिवअवे. It is just layers on top of layers. अनुज ने वैसे भी एक अनुज का एक डेडलॉक था लास्ट वाला जो गिवअवे था. Orangutan. लाइक और सब्सक्राइब ठोकना है गाइस. और इंस्टाग्राम फिर ट्विटर फॉलो करो जल्दी फट से. सब कुछ कर दो. गॉड स्पीड भाई नींद से उठे. भाई गॉड स्पीड का खराठों का आवाज आया मेरे को. Bleed is the one team to try to beat देखा? them now, and they almost did it. What about every other team right here in their group stage? And it's just so crazy. What a debut match. We had an overtime. We had crazy adaptations on Fracture. But the one to end it all, the one that starts things, it has to be Juicy. Well, in any case, I believe we are just going to
go on a quick break. What was that? And we got onto the highlight as well. I love that. But anyways, yeah, we're going to go on a quick break. When we come back, he's going to be disconnected from your channel. God, so straight up onto Mac. I mean, still, I'm just like trying to process this, right? Just look at these plays happening in and out. We're questioning the Sova, and yeah, on the defensive side it was better. Hello guys, rolling in. On the attacking side, 350 a हो little जाओ, questionable roll at कर times, देते. but with the way he finds some of these plays, the way he finds himself in these 1 positions, clearing out a lot of these corners, using the shock dart to eliminate some of Rutvich, RZK's are you there, teams. Rutvich? I feel like this is a very intentional composition switch up, and that's, you know, the coach, the entire team working together. Yeah, it's probably because of the them just not relying on Crazy Guy on attack anymore. Hi, Rutvich, आपका Instagram ID like बताओ. at the beginning where they were just again looking for the utilities to start something off, but now it was the lurks. And look, I'm back. How we doing? How we doing? What a bloody series, huh? That was crazy. I honestly feel like Orangutan, if they had a stronger attacking side, they 100% deserved to win that game. But look, attack was their strong side. In stats, that's what we were talking about. I thought things were looking extremely dire in that first half because Bleed came out 1-8 in that first half. And I got worried backstage. I got worried. जल्दी बताओ ऋत्विज, मुझे निकलना है. After what we saw from map 2. But then Orangutan, they hold it down. They do so well. I think they strung, was it 6 rounds off the back of the second half with a flawless pistol as well. That rekindled the spirit. That got them going. And we started to see exactly how they operated when they were feeling good. चलो भाविन भाई. Under pressure, चलो अनुज भाई. where they start to cave. Yes, मैं भी जा रहा हूँ lunch चलो guys, bye bye. Bye bye. तो भी चैट्स में हाँ bye God. Bye आपकी कर रहा है. कराटे ले रहा था. हाँ. It turned और हमें मस्त आवाज आ रही थी. into problems because in post plants they weren't. Hello guys, next Watchparty करेगा भाविन बुला लेना, आ जाएंगे. But I watched them. चलो ठीक है. Thank you. अरे रुत आप मेरे को एक मैसेज भेजो इंस्टाग्राम पे. नेक्स्ट टाइम ओजी जीते तो मेरी तरफ से गिरोगे. ये हो बरोबर. तेरा एक है यार डेडलॉक का लास्ट 3 डेडलॉक. सेकंड वाला तेरा है ऑलरेडी एक डेडलॉक का. डन मेरी तरफ से अभी दे दे डेडलॉक. नहीं वो तो दे दिया ना, सेकंड वाला तेरे तरफ से ही तो था. ओके ठीक है डन. अच्छा ऋत्विज अग्निहोत्री आया है. हाँ फॉलो करता है मेरे को. चलो ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन. लव यू ऑल. ढेर सारा प्यार. बाय बाय. टेक केयर. See you. Bye.